Hello and welcome to a very special episode of the Pakistan Experience because हम हमारे एनुअल पोस्ट औरत मार्च स्पेशल में आ चुके हैं और इंट्रोडक्शन सब कुछ कर ले। मेरा नाम शहजाद गियास है, मैं पाकिस्तान एक्सपीरियंस का होस्ट हूँ। I'll go next. I'm Sajeer. I don't do much. I'm just here. Can we all do that? I think that's the perfect introduction. मैं मरियम शफकत हूँ और मेरा क्लेम टू फेम है पाकिस्तान एक्सपीरियंस पॉडकास्ट पे आके ओवर शेयर करना और कैंसिल हो जाना और हमें कैंसिल करवाना और खुद भी गालियां खाना और दूसरों को भी खिलाना। मैं अपना टेबल चेंज करने लगी वेरी क्विकली। मारिया, you wanna go next? मेरा नाम मारिया अमीर है और मैं सोच रही हूँ कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं ट्विटर के अलावा भी कहीं गालियां खाऊंगी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। गालियां हम खाते पीते आदतन, अच्छा माइंड न कर। जी जोया। मेरा नाम जोया रहमान है, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हूँ और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह गालियां खाती हूँ, तो आई गेस ये भी खैर है, मतलब ठीक है, ब्रिंग इट। आज सारे गालियां खाने वालों को हमने इकट्ठा कर लिया। Go Sajeer, you had the first question. Yeah, I had a question for Maria and Zoya particularly. तो हम लोग का जो काम होता है ना वो ये होता है, जैसे हम गए एक दिन औरत मार्च and that's it, like we take a few pictures, we feel that sense of solidarity and of course थोड़ी वो online backlash ठीक है, but you guys do this all year. This is a thing for you guys all year. So it's Aurat March, it's pre-Aurat March, it's post-Aurat March, and that's pretty much a year. How do you do this? How do you find the strength to do this? Zoya. Okay, I didn't realize that I'd go first, but I don't know. We really don't find the strength. We just do it. Unfortunately, that's the nature of feminist work. It happens year round. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि again, as somebody who organizes on behalf of Women Democratic Front and then औरत आज़ादी मार्च जो होता चला आ रहा है, and अब तो इस साल तो हमने जलसा की है। यूजुअली बैकलैश जो होता है उसके बाद, और पिछले 2 साल तो इस्लामाबाद वालों की खासी वाट लगी है। वी गेट बर्नड आउट, फिर काफी देर कोई सरगर्मी नहीं होती, हम बस बहुत थक जाते हैं, बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, बाद में बहुत ज्यादा डिप्लीटेड होते हैं, बहुत डीमोरलाइज्ड होते हैं। फिर जब थोड़ी बहुत जान आती है और पता चलता है कि अच्छा फलाना काम भी करना है, कोई और प्रोटेस्ट करनी है या आई डोंट नो कहीं मीटिंग करनी है या इजलास कोई होने वाला है, तो फिर बस चले जाते हैं मुंह उठा के। दैट्स how things are. I think that's the unfortunate part of being well, I wouldn't say unfortunate, but I guess like it's thankless labor at the end of the day. Yeah. And I think कि बस एक बंदा जो है वो 8 लोगों का काम कर रहा होता है, कितने को लोग हैं मूवमेंट में भी, हर चैप्टर में। So it's just, it is what it is, I guess. Thank you. If it means anything, हम सारे थैंक करते हैं for this labor. किसी का अगर वेब व्हाट्सएप खुला हुआ है तो उसको म्यूट कर दें बस। मैंने सॉरी, that was mine, मैंने भी बंद कर दिया, my bad. नहीं, आप कुछ भी कर सकती हैं, आप जो हमारे लिए कर रही है। मेरे कोई 50 ब्राउजर टैब्स खुले हुए हैं जो बस काफी हफ्तों से खुले हुए हैं, काम साथ साथ हो रहा है, so it's just yeah. I'm sure औरत मार्च से घर आके now you're like अच्छा कल कच्ची आबादियों की प्रोटेस्ट हमने प्लान करनी है। सभी तो बैकलैश का इंतजार कर रहे हैं। अभी सारी हमारी एनर्जी जो है, जो बल्कि आधी पुजद्दी जो एनर्जी बची है, वो अब बैकलैश के लिए देखते हैं इस साल क्या होता है हमारे साथ। इज इट वो नहीं होता कि ट्रेजेडी की कॉमेडी बनने में कितना टाइम लगता है? इज इट नाउ कम टू अ पॉइंट वेयर पोस्ट ऑल मार्च ऑल द इस्लामाबाद ऑर्गेनाइजर्स सिट एंड बी लाइक चलो गैस करते हैं कौन से थाने में एफआईआर कटेगी? ये पिछले साल नहीं इस तरह, आई मीन कंसिडरिंग कि हमारे ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ ब्लास्फेमी के केसेस दर्ज जो हैं, आई थिंक वो तो बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज थी। एंड वी एक्चुअली बिकॉज मैं 2 साल से औरत आज़ादी मार्च कर रही हूँ WDF के साथ। पिछले 2 साल पहले आप लोगों को पता है कि पथराव हुआ था, और उसके बाद भी बल्कि इवन जो हमारी स्पेस थी प्रोटेस्ट की और जहां हम डी चौक भी गए, बाद में पता चला कि लॉट ऑफ पीपल वर हरास्ड इन दैट स्पेस बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ येलो जर्नलिस्ट्स हु केम इन। इधर उधर से आदमी उठ के आ गए थे, अपने फोन लेके वीडियोस बना रहे थे, औरतों को छेड़ रहे थे, एंड वी लेफ्ट दैट स्पेस फीलिंग वेरी डीमोरलाइज्ड एज इट इज। लाइक मेरे सर के ऊपर से एक पत्थर गुजरा था, एंड it was there was chaos everywhere. But afterwards when we found out what actually went down, because मैं
आगे आगे जरा थी, पीछे जरा ज्यादा हंगामा हुआ था. It was just really, I mean, we kept questioning ourselves कि हम क्यों करते हैं जो करते आ रहे हैं. And then you know what happened last year in regards to like the a very elaborate and full-fledged disinformation campaign that was kind of targeting organizers across Pakistan. Karachi वालों के साथ भी बहुत बुरा हुआ है, लाहौर में भी काफी लोगों ने backlash experience किया है. So, but इस्लामाबाद में तो ये हुआ कि certain organizers were targeted, उनका नाम जगह जगह आ रहा था. 8 cases दर्ज हुए थे blasphemy के. तो बस बहुत ज्यादा डर और खौफ का आलम तो था. But I think एक sort of out of body experience भी था कि अच्छा ये हमारे साथ हो रहा है. Like अब हम we've made it, I don't know, to the national like news, to the point that just like, you know, to the point of no return basically. It was bad. I mean, I don't even know, like I think a part of me is just dissociated from what happened. It was not a good year though, because obviously what happened to us had lasting effects. So I do want Maria to also address the labor wala question जो पूरा साल क्योंकि वो रोज रात face करती हैं. But Zoya, I do have one more question for you. जिन लोगों ने disinformation campaign सरे फहरिस्त की, वीडियो पोस्ट की, वो लोग चलें, ये तो हम मान लें ये लोग दुश्मन हैं, ये लोग चाहते हैं बर्बाद करना, इन लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, बिलीव्स भी है, मान लिया. पर जब वही लोग उन लोगों के साथ रेड कारपेट शोज होस्ट करते हैं, रब शोल्डर्स करते हैं फ्रॉम पीपल दैट यू वुड कंसिडर allies और पीपल दैट would come to the Aurat March and take pictures, does that hurt even more कि यार ठीक है इनसे तो हम एक्सपेक्ट ही करते थे ये दुश्मन है, पर जब आपको पता है कि इन लोगों ने हमें मरवाने की कोशिश की थी तो कम से कम रेड कारपेट पे इन्हीं लोगों को इंटरव्यूज तो ना दें. आई थिंक इसमें मैं मीडिया के रोल के बारे में बात करना चाहूंगी इन पर्टिकुलर, बिकॉज ये लोग अपनी तरफ से आते हैं कि भाई हम लोग and I really think that a lot of journalists in Pakistan have this really sort of overblown sense of entitlement whereby they come and they think कि बस हम कवर करने आ रहे हैं तो हट जाए सामने से and हमें जगह दें, and they bother the participants and the organizers and they create a lot of mayhem. But जो उनको नई चीज जिस चीज की समझ आती है, and I'm really glad that feminists have started giving the like media outlets a lot of pushback, वो यही है कि basically obviously certain boundaries have to be drawn with them. जितना हंगामा और जितना मतलब गंद मीडिया वालों ने पिछले साल मचाया है, I don't think मतलब it was again like I said completely unprecedented, and I mean just the lack of ethics and this complete disregard of like any kind of responsibility that they had towards people who were a part of like the march, be it the elderly, be it children, be it women, be it families, Khwaja everybody. It just, I mean, मैं सोचती हूँ कि यार आप लोग का कोई ज़मीर नहीं है, आप लोग how do you sleep at night? आप लोग मतलब हमारी ज़िंदगी literally like you are endangering us. People could get killed. And I mean, that actually did happen to us last year. And it's not even that, it's also the personal repercussions. One comrade lost her job. One had to leave the country. बिल्कुल low की सारे हो गए. Like हम लोगों ने बहुत अपने आप को उसके बाद भी self-censor किया है. It's the effects are so damaging that I wonder कि मतलब ये लोग क्या सोच के आते हैं, क्या इनको लगता है कि हो रहा है, इनके सामने हो रहा होता है सब कुछ, मतलब स्पीचेस होती हैं ज्यादा, मार्च एक होता है, और क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है कि वो हमारे साथ इस तरह करते हैं. So that's something that I really want to sort of flag over here. Should I go next? Okay. So जो बात अभी आप कर रहे थे जोया, I feel like so for me, क्योंकि जब से औरत मार्च शुरू हुआ है मैं अमेरिका में हूँ, और उससे 1 साल पहले मैं जेंडर पढ़ा रही थी, और मैं like I was hoping for something like this to happen, not necessarily in the way that it happened, and I don't know कि उसमें कितना हाथ है कि आसमा जहांगीर's funeral was just like a month before the first Aurat March, and so maybe I don't know if that pushed that urgency, or I don't know उसमें कितनी को connection है दोनों चीजों में. But I started following the first one, and then I realized that this was what I wanted to do my work on. तो मुझे तो पूरा साल मैं follow कर रही होती हूँ, तो यानी कि सारा मैंने औरिया मकबूल जान के और जलीलो रहमान कमर के, I'm sorry I actually said that out, but that's the name we That you did for him, so वो अब निकलता ही मेरे मुंह से वो नाम है. मुझसे फूल थोड़ी झड़ने हैं उस बंदे के नाम. इतने को इंटरव्यू देखे हैं, और उसका अपना एक लेबर होता है to be able to watch those two men yell for like hours and have to transcribe that wonderful Barmar.
बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो I also feel like I compensate it. I feel guilty because I'm not there in person. So I also feel that there's a part of me that wants to do everything I can because I'm not there. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पिछले साल हुआ, जो आपने mention किया, the blasphemy allegations and all of that. And honestly, this year I think this year has been terrifying for like since the beginning of the year कि पता नहीं इस साल क्या होगा. क्योंकि आपको you have TLP, you have all of this narrative and this element. और हम तो मैं तो like a part of online feminists जो कि पाकिस्तान से बाहर है, तो मेरे ख्याल है हम सबको बहुत ही बुरे किस्म का फोमो होता है, तो हम लोग स्पेसेस पे, ट्विटर स्पेसेस पे बैठ के जेंडर और फेमिनिज्म की बातें कर रहे होते हैं. तो वहां पे जिस किस्म का विट्रियोल हमने देखा है, there have been like with our accounts, there have been blasphemy allegations, there have been rape threats, there's been stuff like what? तो वहां पे ये भी था कि अच्छा हम फिर औरत मार्चेस पे वो जो ट्रोल्स हैं हम जाएंगे और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे. तो this time around I felt that there was fear beforehand far more because I think पिछले साल in spite of the fact कि वो blasphemy allegations हुई और ये सब कुछ हुआ, I think there was this element of we don't know if they're actually going to go through with it until they did, and so you knew what could happen. This year I think everybody already knew कि हो क्या सकता है हमारे साथ. वो क्योंकि मुझे लगता है कि लाहौर में भी और हर जगह वो feeling थी marches में. All my friends who were going were sort of like putting safety tips on Twitter and talking to each other about does somebody know where you're going to be, somebody knows where you're going to pick everybody up, अगर गुम गए तो वो area, like it was very terrifying. और मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा आपके लिए वो भी एक चीज ड्रॉनी होती है जब आपको पता है कि वो मुंह बोली तो जो भी बातें करें कि उन्होंने दे दिए परमिशंस या नहीं दी, when you know in terms of will that they are against you, that the state is against you, that the police and those bodies are against you, and that they would rather protect, like when it's a TLP march and you're calling for killing of Shias, तब उन्हें मसला नहीं है, तब आपकी पूरे मुल्क को पसूड़ी नहीं पड़ती और वो मीडिया पे 4 महीने नहीं बोलते उसके खिलाफ, इस चीज पे वो बोलेंगे. तो आपको एक वो सेंस ऑफ डिजेक्शन भी तो होती है ना, दैट हम like even if they are being forced to reluctantly provide protection, this is reluctant protection. These are not people who are there because they want to do their job. They themselves are not with you here. तो वो मेरे ख्याल है वो एक बड़ी palpable feeling होती है कि आपको पता है कि ये उनके साथ खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे. इन्हें हम प्रॉब्लम, सबसे इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम औरत मार्च है. मतलब पाकिस्तान की सब प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम औरत मार्च है. वो स्टेट के लिए प्रॉब्लम है, वो आइडियोलॉजी के लिए प्रॉब्लम है, वो कल्चर के लिए प्रॉब्लम है. एंड आई वाज लाइक, मतलब ये जो लोग फतवे डाल रहे हैं कुफर के और लोगों को कत्ल कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉब्लम है, हम टेररिज्म से बड़ा प्रॉब्लम है. दैट इज सो, आई थिंक, soul killing. It makes your work more than feminist work. It sort of makes it like हम स्टेट की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कितनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं इस एक लड़ाई में. आई थिंक that's the most kind of overwhelming message that I got. पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम की बात करना प्रॉब्लम है. पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया होते रहते हैं पाकिस्तान में, बात तो ना करें ना, क्रिकेट इफेक्ट हो जाती है यार. आपको जब पता है कि बैरूनी साजिश है क्रिकेट को इफेक्ट करने के लिए, तो मत बोले ना शिया मरे, ये बोलने की क्या जरूरत है. Mariam and Sajeer, I know I'm hogging because Zoya is here with us for the first time, so I have many questions for her, but please feel free to jump in. Zoya, I do want to ask you, जो मारिया ये बात कर रही हैं, because you actually deal with the administration, get the NOCs and stuff like that. Hands off approach है कि यार खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो कल हम पे आएगी तो ये लेटर ले लें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या डू यू फील लाइक द स्टेट apparatus is ideologically against the औरत मार्च and that is why security की वो permission देने में इतने मसले मसाइल करते हैं, or do you feel like they're just trying to save their ass?
Obviously हर गवर्नमेंट का अपना एजेंडा होता है, and this is, I'm glad that you brought this up, बल्कि जब मारिया भी इस बारे में बात करी थी, I wanted to kind of interject and say something particularly about this entire NOC ordeal. हम अब कुछ सालों से जाहिर है NOC के लिए अप्लाई करते आए हैं, और हम इसलिए नहीं अप्लाई करते because we think we need to appease you know, like the ICT administration or anything. It's simply because it's just dangerous to exercise your right to freedom of speech and right to freedom of assembly in Pakistan, especially as women, as you know, ख्वाजा सिराज, as children. मतलब हमें यही literally, हम लोग जब हमारी अभी self defense meeting कुछ दिनों पहले हुई है, तो उसमें यही पहली बात ये हुई है कि ओ अगर बॉम्ब फट गया, because we know that even that's possible, quite honestly. And that's the thing, like we literally only apply for the NOC because we have to remind the state ke hello, this is your job, you have to protect us, this is on you, this is not on us. We can make arrangements मतलब ourselves as well. हम लोगों की पूरी एक सेल्फ डिफेंस की टीम होती है, इतना हमारा मतलब मगज उसमें जाता है quite honestly, just trying to make sure कि you know, like हमारे रूट्स वगैरह क्या हैं, exit plan क्या होगा, and I mean that in itself is just so much labor expended. But NOC का भी जो ये खेल है, मैं ऐसे कहूंगी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज वी अप्लाई वीक्स बिफोर, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती. दो साल पहले, क्योंकि मैं 2 साल से यहाँ ऑर्गेनाइज, उससे पहले मैं भी बाहर थी मारिया की तरह, तो 2 साल पहले ये हुआ था कि हम लोगों ने अगेन कुछ हफ्तों पहले अप्लाई किया था NOC के लिए, एंड लिटरली हमें मार्च से एक रात पहले मिली है, और उस पर कंडीशंस लिखी थी कि अच्छा जी कॉन्ट्रोवर्शियल प्लैकार्ड्स नहीं आप उठवा सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. मतलब दे काइंड ऑफ ऑल्सो वांट यू टू water down your own politics. They really want to dilute the message. They don't want you to obviously express yourself, or like they don't, I mean, I wouldn't even say that they don't care. I think that they're genuinely reluctant to show people, show the masses that you know, like they support feminist politics. मतलब कोई सीन ही नहीं है. And then वही था कि मतलब हम लोग इसी बात पे गुस्सा कर रहे थे कि like you are basically asking us to do the dirty work of the state, कि हम लोगों को जाके कहें कि ये प्लैकार्ड ना उठाओ, ये ना कहो, वो ना कहो, which and then उसके बावजूद हमारे ऊपर like पत्थरों की बरसात हुई, पथराव का पूरा वो मतलब जो सारा आलम था वो सब कुछ भी हुआ. तो मतलब क्या फायदा हुआ उस NOC का? एंड देन पिछले साल तो उन लोगों ने दी नहीं. एंड आई थिंक वही था कि एंड में इतनी थ्रेट्स थी अगेंस्ट अस, पता नहीं जो हया मार्च वाली खवातीन थी वो कह रही थी कि हम डंडे लेके आएंगे, जूतियों से इनको मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे. एंड लिटरली हम लोग सुबह सुबह, आई रिमेंबर बिफोर वी वेंट टू द प्रोटेस्ट स्पेस प्रेस क्लब जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा कि छुरी किसके पास है, मिर्ची का पाउडर लेके जाएं साथ, ओ ये पेपर स्प्रे बनाया मैंने घर में, ये ले लो टाइप, ये 6 बोतलें मेरे पास. मतलब ये चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं हमेशा. एंड देन शुक्र है मार्च पिछले साल फिर भी हो गया था, बट देन आई मीन यू सॉ व्हाट हैपेंड afterwards. And then this year, I mean, you know that in Islamabad, at least, like we decided not to do the march. Well, another group did organize the march because some people did want to march, and obviously they have every right to protest and march on 8th March of all the days. But हम लोगों ने basically decide किया कि एक तो क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा time फायर फाइटिंग करते हुए knee jerk reactions में basically लगता है कि हम बस respond कर रहे होते हैं कि अब right wing ने ये कर दिया, अब state ने ये कर दिया, अब ICT administration ये कर रही है, कि हम लोग actually कुछ build तो कर नहीं पाते in terms of like, you know, like building like a movement or like doing any kind of like creative feminist work. So how are we going to actually sort of move away from this entire like vitriol and try to build something from scratch? Because we also need to sit and reflect on the movement itself. We don't get the time to do that because all we do is basically react to the backlash, you know, that's meted out. So वो तो एक चीज होती है, but other than that, it really angers me to think about how, you know, like there has to be this constant negotiation, and the state actually expects us to self-censor or like to basically, I don't know, like respect its narrative, which is obviously anti-women, I would say. And इस बार भी उन लोगों ने बहुत कोशिश, transformed that into a political space. We transformed F9 Park, that is, into a political space. But उसके इर्द गिर्द like जिस area में हम जलसा कर रहे थे, barbed wire लगी हुई है, you know, like people are being checked and वो सब कुछ हो रहा है. मतलब एक बहुत securitized sort of space ये लोग बनाते हैं जिसमें basically हम लोग कुछ भी मतलब अपना basically like feminist sort of जिद्दोजहद करते हैं, which obviously like is something that is very difficult to come to terms with. But that, I guess, is the reality of organizing anything in Pakistan that's of a public nature. And unfortunately, we sit with that discomfort day in and day out. कि इन लोगों ने प्रोटेक्ट तो करना नहीं, कल को कुछ होता है खुदा ना खास्ता तो then it's going to be on us. हम लोगों को बुला रहे हैं कि आप लोग आए इस सरगर्मी में शामिल हो.
So yeah, it's a very tricky and frankly infuriating situation. I have a question for both of you. So because I've been going since the first Aurat March, and I make it a point to go every year, and I think it's such an important thing that we do every year. But मुझे जो मैंने इस दफा notice किया था, and I'm talking about Karachi specifically, was that I feel like because of last year, and I may be wrong, so please jump in and correct me, but I feel like because of last year, इस दफा मैंने posters भी कम देखे थे. The thing is, the nature of the posters was also different. And the way people responded to being photographed, which I completely understand, was कि सबने अपने मुंह के सामने वो रख दिया था. Because and even when I was going to the march, one of the reasons why I didn't take a poster, and this is the only year that I wanted to take a poster and I got talked out of it, was कि कोई Photoshop कर देगा. Or and so again, I go to the march usually alone every year, but this time my little sister came with me, and I was freaking out because मेरी छोटी बहन है, and मुझे ये था कि अगर कुछ हो गया तो like चलो ठीक है, हमारा अपना तो बनता है whatever, but बहन अब साथ है, right? So yes, there was security. I think it was very secure. We were also very freely told कि अगर कोई मीडिया वाला आपको तंग करेगा तो आके रिपोर्ट कर देना, which I think also kept certain people at bay inside the march. वही लोग जो बेगैरती करने आए थे, उन्होंने बाहर मार्च की बेगैरती की है, कम तादाद में की है, लेकिन की है, ठीक है, which I think was still like great because last year थोड़ा ज्यादा हो गया था. But I feel like the impact that last year had, उसकी जो the after effect was felt in this march greatly, right? With whether even when it comes to not just the organizer, but when it comes to people as well. And like you said, pepper spray vagera, like there were contingency plans in my mind as well. I was like, पहले मेरे दिमाग में था कि फेयर हॉल में होगी, तो बोला अच्छा चलो अगर कुछ हुआ तो जिन्ना अस्पताल यहीं पे है, लाइक ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट वो अब कायदे आजम के मजार के ऑपोजिट है, तो अब बंदा क्या करे. My sister went closer to the stage. I was like, stage के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाओ. Like इतनी ज्यादा like anxiety थी throughout that the entire experience became more anxiety stricken as opposed to like feeling that sense of solidarity. So like, do you guys agree with this? Did you also notice this across the board in all the marches? Maria, do you want to respond to that, or should I? Mariam hasn't spoken, but okay, I think I'll just sort of very briefly. मुझे I mean, just from observing the reactions and the responses, the one thing that at least, because I'm trying to study this pattern over like 5 or 6 years, 5 of the Aurat March. So for me, the way I view it is that I think the first one and the second one were like this outpouring of anger, joy, sadness, whatever, but the idea that, oh my God, we can actually do this. Women can come on the street, we can sing, we can dance, we can scream, we can be in a public space. And I think that 2018 and 19 were like these years of movements. PTM भी चल रही थी. You had these years of आपकी student progressive movement भी उसी वक्त उठी है. वो सारी movements उठी हैं. अभी भी वो चल रही हैं. But I feel like now it's that stage of not exhaustion, but also that stage of, oh, this is what fighting with the state looks like. This is what the drip of dealing with a state like ours is on a yearly basis, on a monthly basis, on a daily basis. क्योंकि वो शुरू में तो आपका you have that, you have a fire, you have that inspiration, you have all of that. And I'm not saying that doesn't still exist. I'm saying that, but the reality check maybe is missing in the beginning, because in the beginning the fire outweighs that. Like मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले साल से especially वो जो है ना कि अच्छा हमारे साथ क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस मुल्क में ये होता है और क्या क्या किया जाता है, और वो जो अंडरस्टैंडिंग है कि मलबा हमेशा नैरेटिव का प्रोग्रेसिव नैरेटिव पे गिरता है, रिग्रेसिव पे कभी नहीं गिरता. उसको they don't worry about how they're going to take this to the streets and their security or any of that. It's the security bodies that worry about what they're going to do, right? Like your police officials are worried then. So it's just such a reversal, right? मतलब वो चीज मुझे लगती है कि अब वो वाली stage है of
oh, this is what taking up any narrative that is not even necessarily counter or contrary, क्योंकि आपकी constitution में तो ये narrative है, you are fighting for many of your constitutional rights, but I feel that anything that goes against your popular national narrative, I feel वो वाली exhaustion अब आ रही है. सब movements में मुझे लगता है, student movement में भी आ रही है, सब में मुझे लगता है कि वो जो है ना कि अच्छा अभी हमें उठा लेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, क्योंकि वो करते आ रहे हैं. So I think that's setting in. I don't know how you guys feel about it. Like I have never unfortunately attended, और इस दफा भी औरत मार्च से कुछ ही दिन पहले जो है I had to leave again. लेकिन एग्जॉशन वो बिल्कुल मारिया वाली बात की शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और वो था, और फिर वो आहिस्ता वो जब गालियाँ पड़ती हैं, मतलब माई प्रेजेंस इन फेमिनिस्ट सर्कल्स हैज बीन लाइक इंटायरली ऑनलाइन, तो जब गालियाँ पड़ती हैं और जब men hog up the spaces, तो फिर you realize कि नहीं ये तो फिर होता. मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है, I think some of you can also relate कि there are some let's say even a month or time in between when I'm like exhausted, I'm like I'm done with social media, but then there are times that I'm like नहीं, consciously I am like these abusers, ठीक है, they should not be allowed to give space online or offline. एक्चुअल तो जंग इसी चीज़ की है ना. और मेरे ज़हन में when you said के now there is this exhaustion and dire and all that, तो मेरे ज़हन में उस वक्त भी आसमा जहांगीर की एग्जांपल आ रही थी कि I mean one should look at how she fought her whole life. One should look at other women, let's say निगत दाद को देख लें, बाकी प्रोमिनेंट खवातीन जो कि इसमें इन्वॉल्व रही हैं इस एक्टिविज्म में. तो आई थिंक कि इसको नेगेटिवली लेने की बजाय मे भी शायद दूर से बैठ के मुझे यूटोपियन फीलिंग आ रही हो, लेकिन इसको नेगेटिव तो बंदा लेता ही है, लेकिन इसको बंदा आई वुडंट से कि इट्स एग्जॉशन, आई वुड से इट्स मैच्योरिटी, and then you know reacting to these threats and maturity accordingly, and then becoming more resilient on the way. Like for example, my personal journey is such that you know अब मुझे गालियों से फर्क नहीं पड़ता. शुरू में मतलब अब मैं अपने आप को भी बार बार कहती हूँ कि अगर पढ़ रही है ना तो इसका मतलब है कि ये इंगेज हो रहे हैं, और तो मतलब yeah, this is what my approach has been towards it, online and off. अच्छा, और एक और चीज़, ये क्या नाम है, जलीलुर रहमान कमर और इन जैसे बहुत सारों से रिलेटेड मैं ये अभी इस पॉइंट पे आ गई हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी इनको बोलने की जगह ही नहीं देनी चाहिए. मतलब आप कोई लेट्स से कि कोई न्यूट्रल सो कॉल्ड सोशल मीडिया चैनल है या इदारा है ना, तो आप जब बार बार एक ही बंदे को, खलीलुर रहमान कमर को, मतलब वो भी उस खलीलुर रहमान कमर की छेड़ बन गई है कि जो भी उससे बात करता है उसे यही पूछता है कि आपका अच्छा आप फेमिनिस्ट हैं, अच्छा आपका फेमिनिस्ट के बारे में क्या ताल्लुक है. मतलब जिस तरह काफिया बच्चे नहीं होते कि हर उसको एक दफा छेड़े, उसको हर दफा आप क्यों कर रहे हैं भाई, आपका क्या मतलब, आप तो क्या पॉइंट है और सुनने. तो मतलब ऑनलाइन तो मैं अपने पेज पे ये पॉलिसी काइंड ऑफ अनाउंस भी की थी कि अब तो मैंने स्ट्रेट ऑन डिलीट और बैन और ब्लॉक कर देना, क्योंकि मैं समझती ही नहीं हूँ कि ये इस काबिल है कि अब मुझे सारी वो गालियाँ पता चल गई हैं, गश्ती रंडी ब्ला 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 सारी मुझे याद होगी, मुझे नहीं वो अब शौक ही नहीं है दोबारा. हम क्योंकि डिस्कस करे थे मीडिया का बिहेवियर, तो हमारी गंगूबाई सना जाफरी हैज जॉइंड अस. पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं इनकी दिखाएं हम आपको. You guys hear it? आवाज आ रही है? ऐसे जो मीडिया के लोग होते ये आप मुझे टच करके हरासा कर रही हैं, आपको पता है, आपको पता है, आप मुझे टच करके हरासा कर रही हैं. मैं उनसे बात कर रहा हूं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें. आप औरतों को औरत नहीं समझ रहे हैं. मुझे ये बताएं, मैं आपको कुछ बताने नहीं आई हूँ, आप हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं. हम आपसे कह रहे हैं नो मीन्स नो, वी डोंट वांट टू गिव एन इंटरव्यू, यू डू नॉट हैव अ वीडियो पास. Sana, are you still here?
पहले तो सो हम जो वो सारी बातें कर रहे थे, आई थिंक सना फेल्ट दैट टुडे। आई वाज स्पीकिंग टू सना एज वेल, तो आई लेट हर शेयर हर एक्सपीरियंस एंड माइक इज ऑल योर्स सना। उफ, देख के तुम दिखा के मुझे दिल की धड़कनें मेरी वापस वो गुस्सा और वो वापस आ गया है। अभी मरियम बात कर रही थी एग्जॉस्शन की, सो या मरियम, आई एग्री विद दैट। लाइक मुझे भी हमेशा यही लगता है कि सबसे ज्यादा जो तरीका आजमाया जाता है वो यही होता है कि एग्जॉस्ट कर दो ना आप अपने मतलब के मुखालिफिन को। सो वो यही चाहते हैं लोग कि हम एग्जॉस्ट हो जाए। लेकिन आज जिस तरह की चीजें हुई हैं, ऑनेस्टली गालियों से और लोग क्या कहते हैं और वो सारी चीजें, वो तो हो चुकी, वो तो पुरानी हो गई ना। तो एग्जॉस्शन अब उस चीज का और उस चीज का तो अब खत्म हो गया। बट व्हेन यू आर प्रेपिंग फॉर समथिंग एंड यू आर लाइक सारे मिलके काम कर रहे हैं और एक्चुअली में जो बात करना चाह रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड देन आप वहां पे जाते हो और अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि कुछ और नहीं है तनकीद करने पे, तो इस दफा हमने कोशिश की थी कि ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से और वो खुद करें। सो वी हैड प्लान्ड अ मेमोरियल, तो हम सारी ख्वाजा सरा औरतें हमारी इकट्ठी आई थी। तो वो सारी मीडिया एकदम से पागल हो गई, वो कैमरास अपने सारे लेके उन्होंने उनको सराउंड कर लिया और पूरी मार्च चल रही है। बट पहले कोई घंटे तक वो बस उनको सराउंड करके रखा, सवाल पूछ रहे। हम कह रहे हैं हमने अभी नहीं जवाब देने, हमने मार्च लेके आगे जाना है, थोड़ा सा मतलब कि हम जब रुक जाएंगे तब आप सवाल कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद ये जो सर हैं हमारे, बहुत एक जो हीरो शाहरुख खान, अक्षय कुमार कहूंगी मैं, ही वाज लाइक कि ये आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, हमारी ख्वाजा सरा बहनों को कह रहे कि आप लोग यहाँ पे मार्च पे क्या कर रही हैं, आप लोगों को तो अपना अलग से कुछ करना चाहिए, ये तो खवातीन का मार्च है। तो उसके ऊपर एक मार्चर ने आके कहा कि ये हम खवातीन है। उसने कहा ये खवातीन है, उसने कहा जी खवातीन है। पता नहीं उसके बाद वो क्या बकवास करे, मैं तो अब इतना सुन हो गई हूँ, मुझे इतना। खैर एनीवे, फिर हमें बताया, हमारी पूरी मीटिंग्स हुई थी, हमने मीडिया के लिए पूरे वो बनाए थे कि वो क्या सवाल कर सकते हैं, किस किस्म के सवाल कर सकते हैं, कितनी प्रॉक्सिमिटी पे उनको रहना है, क्या उनकी हदूद है जहाँ पे वो रह सकते हैं। तो इसलिए मीडिया पासेस थे कि सिर्फ वो लोग जिनके साथ ये बातें हुई हुई हैं, जिनको पता है हाउ टू बिहेव, वो आए। इस बंदे के पास मीडिया पास नहीं था। मैं गई और मैंने कहा तुम्हारे पास मीडिया पास नहीं है, ठीक है, और तुम्हें कहती है नहीं, इज लाइक मेरे पास मीडिया पास है तो आप बात करेंगे, मेरा राइट है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मतलब कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है, तुम एक मखलूक, एंड ऑल्सो उसको पूरा टाइम लग रहा था कि मैं शीमेल हूं, तो इसलिए भी हेंस वो बाद में वो भी काफी ज्यादा, ये मेरा इसके साथ खाली इनकाउंटर नहीं था, ये तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि जब जो पहली वाली वीडियो मैंने की है वो रिकॉर्ड हो रही थी, फिर मैंने भी निकाल के रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे यही था लाइक क्या दिखाना चाह रहे हैं ये क्या चाहते क्या है। सो दैट इज लाइक काइंड ऑफ एग्जॉस्टिंग कि हम वहां पे तैयारी करना चाह रहे हैं यार, हम एक एक मेमोरियल करना चाह रहे हैं, हमने एक चीज की भी है, लेकिन आप हमारी एनर्जी चूस रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं प्लीज अभी बात नहीं करनी, बिकॉज वी वांट टू कंजर्व दैट एनर्जी, इट्स आवर डे, प्लीज लेट अस हैव इट फॉर वन डे, वन, जस्ट वन, बट नो। सो तो वो वाला एग्जॉस्शन अभी है, लेकिन वही है, जब सो के उठेंगे तो कल से अब दोबारा सोचना शुरू कर देंगे कि किस तरह से नेक्स्ट टाइम जो है ये नहीं होने देना। हमारा तो वैसे भी बंद करा दिया था जल्दी, 4-4:15 बजे औरत मार्च उन्होंने आगे रौला डाल दिया था कि बंद करें वरना आपकी सेफ्टी के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और यहाँ पे पूरी एक स्पीच दी पुलिस वाले अंकल ने आके बहुत अच्छे से, कि अभी आपको पता है पेशावर में ब्लास्ट हुआ है, पता है ना आप लोगों को कि जो ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर ये होता है, और अभी पता नहीं फलानी जगह पे ब्लास्ट हुआ, पता है ना आपको ये चीजें होती हैं। तो अगर हम आपको कह रहे हैं कि अभी यहाँ से चले जाएं तो चले जाएं, हम आपके फायदे के लिए कह रहे हैं ना बेटा, आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। एंड वहां पीछे वो खड़े हुए हैं मौलवी जिनकी वजह से हमें भेज रहे हैं, आपको मतलब कि बेसिकली हमारी सेफ्टी के लिए वहां पे बुलाया गया था। ये जो रिपोर्टर भी था, मैं पुलिस वालों के पास जाके लिटरली बोला है, मैंने कहा प्लीज अगर आप हमारी हिफाजत के लिए हैं, ये बंदा हमारी ख्वाजा सरा बहनों को और हमें हरासा कर रहा है, इसको आप प्लीज पीछे ले जाए, हम नहीं चाहते हमें रिपोर्ट करे, इतना हमारा हक नहीं है
कि एक बंदा जो हमें लग रहा है कि जिससे हम अनकंफर्टेबल है, आप उसको पीछे कर दें. Shehzad, no one, like they would look, they would listen, and then they would stand like सीधा देखते हुए again. It was like दीवारें चल रही थी बस हमारे साथ, बस वो थे क्योंकि उनको होना था for show and for the pictures. But yeah, काफी कुछ अभी मैं अपने फोन से गुजर रही थी तो वीडियोस लोगों ने भेजी थी, वो तो मुझे काफी अच्छी अच्छी चीजें भी रीलिव की मैंने कि अच्छा ठीक है, बहुत खूबसूरत लम्हात भी थे. लेकिन हाँ, ये चल रहा है. और सुनाओ सब फिट हो सारे? Zoya, I you just want to wanted to say say that. something पहले. Sorry, Sajeer, go for it. Sorry, I was just gonna tell Sana that she's so beautiful, and ऊपर से she's so badass. Like I love you already. Like I know this is our first interaction, but I love you straight up. चैट में भी सब आपके फैंस हो गए हैं सना. हाँ, दूसरी देखनी है, ये जो 10 रुपए की सेट वेट लगा कर आया था मीडिया बनकर, इसकी दूसरी वाली वीडियो देखनी है एज अ टू ट्रिक. क्या मतलब? और इसकी वीडियो ये he's a thing? No, it's also the one you posted on your Insta ना. ओ अच्छा वो. ओ he's so annoying. चेक तो करो उसको, अपनी तरह से बाल चेक करें ना. ये उफ, मैं मीडिया हूँ. फकिंग मेल एंटाइटलमेंट. मेरे पास पास नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. हमें नो कहने का हक है. आपका मसला नहीं है वो. हम आपके सवालों का जवाब देने नहीं आए. आपके सवालों का जवाब देने नहीं आए. The media is harassing us. We don't, we're not giving any answers. Sorry. क्या कह रही है? हम कह रहे हैं जब हमें नहीं जवाब देना. तो जिसको वो जवाब नहीं देना चाहती है क्या मसला है? What the fuck is NPO? Is that a thing? Is that a news channel? No penis on me. I think उसका NPO जो है ना पूरा. Acha, with regards to this, I think again, this is speaking from personal experience today in Karachi, but यहाँ पे वैसे I was a little bit iffy about the fact that media वाले लोग हैं, because obviously there was this one moment where the women on stage were saying something, and एक line आई थी about media people जो propaganda करते हैं, and like I remember they said that on stage, and for a good 5 seconds, all the men who were there with the cameras looked at each other and they were just like, "Hamari baat kar rahi hai?" And I was like, "Yeah, bitches, they're talking about you." But they announced same thing. they announced repeatedly कि कोई भी मीडिया का बंदा आपको harass करेगा ना तो आप you can complain. अभी वो personally I didn't have to, but मैं full इतने चौड़े में घूम रही थी. Anytime like somebody came up to me, they'd be like, हम आपसे सवाल पूछे, आपको किस तरह का सवाल पूछना है, आप पहले ये बताएं. And then they'd be like, मैडम बस आपसे क्या कहते हैं मार्च के बारे में सवाल, कौन सा सवाल पूछना है आपको, पहले ये बताएं आप. Like for no real reason, but it felt so empowering to know that they had announced it, and like if anything were to happen, I could just simply go up to an organizer, and whether anything happened or didn't happen, but that option was available for me to pursue. I think that was great. Yeah, But that's what I also mean कि अंसार अब्बासी जिसने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था, जिसने वीडियो पोस्ट की थी, जब उसने एंटी इमरान खान एक न्यूज रिपोर्ट की तो वो लिबरल्स और लेफ्ट वो स्पाउस फेमिनिस्ट वैल्यूज वो उनका हीरो बन गया. Just because, again, I'm anti-Imran Khan, I'm anti-PTI, but I can't support Ansar Abbasi because he literally tried getting feminists killed. अब उसने क्योंकि जी अब उसने वो लेटर पे रिपोर्ट कर दिया तो वो हीरो हो गया. सॉरी मैंने काट दिया आपको, जोया और मारिया आइदर हु वांटेड. मैं सिर्फ ये जो अभी शहजाद ने कहा है ना, भाई आपको समझने की जरूरत है, हम लिबरल्स इतने तरसे हुए हैं कि कोई भी थोड़ी सी गलती से सही बात कर दे तो मुझे लगता है कि वो सब पुराना भूल जाने को और माफ करने को तैयार हो जाते हैं, which is very sad, but I think that's the liberal condition in Pakistan कि वो इसने इन्हें चंगी गाल काट दी थी, सब कुछ माफ आज Remember when Amir Liaquat was a feminist hero for 5 minutes because Zoya Rehman कमर को जलील कर दिया था. तो वो भाई मुझे अभी तक याद है कि जलील रहमान कमर ने जब वो मीनारे पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ था
तो उसने कोई एक बात कही थी कि ये देख के तो फिर मैं भी समझता हूँ कि ये सही कहती हैं। वो मतलब कुछ 2 सेकंड के लिए उसने ना गलती से ये कह दिया था, उसके मुंह से भी गलती से निकल गया होगा। I genuinely on Twitter saw maybe he has changed. And I was like, खौफ करो, तुसी माफ कर दो, नहीं कहता सानू feminist ally Zainab Rahman, please forgive me. I'm sure somebody looks at Khalil Rahman Kamar and like I I can know, fix him. but like अभी जो बात हो रही थी ना, what Sajeer said, मैं तो होती वहां पे तो कसम से I would have doubled down and sort of pretended that we have the ability to get these men arrested, even though it's obviously nonsense. But I would have said, आपने क्या बोला है मेरे बारे में? And just to kind of scare the crap out of them, because how often do we get to do that as women? Never. So I would totally use that power. If मतलब वो power तो नहीं है, but अगर उन्हें लगता है ना एक दिन के लिए हमारे पास वो है, मारिया ऐसा करते ना, नेक्स्ट औरत मार्च में इस्लामाबाद में धावा बोलने के लिए मैं आ जाऊंगी और लाहौर वाली में तुम चले जाना। हम जाके हमारे अंदर जो पिछले 5 साल की हमें तो वारंट्स दे दिए, हमारे साथ तो हिना जिलानी पीछे खड़ी हुई है कि वो बताएं, किस नाम लेके बताएं। मेरे अंदर जो मिस की हुई मार्चेस की इतनी एनर्जी कूट के भरी हुई है कि मतलब ये सेंटिमेंट मेरे अंदर भी होता है कि मैं ना डंडा लेके आना है, मैंने टेजर लेके आना है, मैंने छुरियां लेके आनी है। मुझे लगता है और मैंने कर भी देना है। मुझे सच्ची लगता है कि मरियम छुरिया नहीं इस पॉडकास्ट में कुछ नहीं काटना। मुझे तो कोई छेड़ेगा तो मैं तो छुरियां मारूंगी। सॉरी यार, पाकिस्तान में तो एक्चुअली आई एम नॉट सॉरी, गुलाबी गैंग की बहुत कमी है। देयर इज अ नीड, there is really a need for it. अब मैं I'm not saying every woman can do it, but we need some women to do it, because वो जो कुछ औरतें होती हैं ना जो मर्दों को आगे से मार देती हैं या कुछ कर देती हैं, वो जो एक केस होता है उससे मर्द थोड़े से बौंतर जाते हैं कि ये हुआ क्या है, ये कैसे हो सकता है। उसकी जरा जरूरत है हमारे माशरे में, honestly. I mean, sometimes you can just stroll them back also. Like, so yeah. I was in charge of media actually this time around at the Jalsa, and एक cameraman अच्छे खासे मतलब बड़े चैनल से बस सुन ही नहीं रहा था उसको। मैं साइट पे कर रही हूँ, इंक्लोजर्स बनाए हुए हैं भैया, आपको बता के मैं थक गई हूँ, साइट पे हो जाए। जाहिर है पार्टिसिपेंट्स भी हैं, उन लोगों ने देखना है कि स्टेज पे क्या हो रहा है, साथ आप ऑर्गेनाइजर्स को भी तंग कर रहे हैं। वो ढीटों की तरह खड़ा है, मूव ही नहीं कर रहा, बिकॉज as I said, and I mean, as Sana and others have pointed out, that their sense of entitlement is just, I mean, it's so hard to wrap one's head around it, कि बस उनको लगता है आगे कवर करना है, हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपको कवरेज दे रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी हो, take it or leave it. So मैं उसके खैर I'm like barely 5 feet tall, मैं उसके कैमरे के आगे खड़ी होगी कि भाई मेरी फिल्मिंग कर लो बस, ठीक है, फिर घर जाओ टाइप, because I'm sorry, like we are not going to let you film anything if you're not going to, like literally participants के अंदर वो घुसी जा रहा था। हमारा ये भी है कि because again इतना वो आफ्टर वो 2020 वाला मार्च जिसमें पथराव भी हुआ है, हरासमेंट भी हुई है, इतनी हमारी सेल्फ डिफेंस टीम की और वॉलंटियर्स की ग्रिल्स हो चुकी हुई हैं कि अब उनको भी पता है कि बस वो बंदे को और कैमरे को और हर चीज को उठा के बस बाहर फेंक देंगे। सो अब मीडिया के साथ ये, क्योंकि इतने फ्रैंकली इनमें से बहुत से लोग बदतमीज हैं और इतने ढीठ हैं और इतने इररिस्पॉन्सिबल और अनएथिकल हैं कि इनके साथ इन्हीं की फिर जुबान में बात करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि मतलब अगर आई रिमेम्बर कि औरत मार्च लाहौर ने एक पूरी ब्लैक लिस्ट बनाई थी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिनको नहीं कवर करने देना, फिर अभी जो इन्होंने कितनी अच्छी इंस्टॉलेशन भी की है, दैट्स आई एम सॉरी बट यू हैव टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज। इनके साथ मतलब वही ना लातों के भूत वाला सीन है। सो या लेकिन वो फिर भी नहीं समझे जोया, वो मतलब के यूट्यूबर्स, मतलब के रिपोर्टर्स तो क्या यूट्यूबर्स आए हुए थे रैंडम but I do think yellow journalists out, we even the nice ones, I was like I'm really sorry but कोई after what happened to us last year कोई सीन ही नहीं है। prove yourselves, दिखाओ कि तुम लोग अच्छी coverage करते हो, you cover progressive issues ethically and then maybe we'll look at you or I don't know like घास डालेंगे। लेकिन but there's chances कि अगर हम ना आए ना तो आपकी ये मार्च के बारे में किसी को पता ना चले ना, हम नहीं चाहिए। Do you guys really think कि हमें कवरेज चाहिए? हम लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं कि ओ हम करेंगे मार्च, मीडिया कवर करेगी। नहीं तुम हमारे पे एहसान नहीं कर रहे हो, साइड पे हो जाओ, हमें बस चलने दो। they make the march seem, the space seem like पता नहीं क्या performance हो रही, and I mean I don't mean like performance in a like artistic sense, I mean performance in a derogatory I feel uncomfortable sense. Yeah, exactly.
कि वो उसको पूरा तमाशे की तौर पे, वही तो वो चाहते हैं कि वो उस तरह से प्रेजेंट करें, एंड देन दे डू दैट. एंड वही है कि वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, व्हिच आई थिंक सो मेनी चैप्टर्स हैव ऑलरेडी बीन डूइंग. कोई मतलब अब तो बिल्कुल मीडिया के साथ कोई भी निगोशिएशन नहीं है, और आई थिंक ये बहुत अच्छा लाहौर वाले और सारे कर रहे हैं कि बस इसी तरह इनको धक्के मार के निकालें. This is the installation you were talking about, right? Lahore wala. I loved it as well. Yeah. एक by the way somebody put up a story of, so इनमें से एक जो बंदा था जिसकी इन्होंने यही कटआउट जिसका लगाया हुआ था, वही जर्नलिस्ट उसके साथ यूं करके पोज कर रहा है. I was like, bro, you really didn't get it, did you? It was surreal to look at that. That's really that's what you call self-trolling. Laiba has joined us. Aurat March, Multan in the house. How are you, Laiba? Hello everyone. I'm sorry मेरी आवाज आपको ऐसी बर्दाश्त करनी पड़ेगी. आज बहुत लगे. I'm really sorry for this bad audio quality today. But कैसे हैं आप लोग, and how was the march in every city? We were very very proud of all of you. Pictures देख के, videos देख के बहुत मजा आया सब शहरों की. But I think जो अभी जिस conversation के दौरान मैंने join किया है, it was about how people were covering it, या specifically media organizations. So यहाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये हुई कि काफी अरसे से कुछ खवातीन जर्नलिस्ट मुझे शेयर कर रही थी कि यहाँ पे क्या क्या होता है उनके साथ फील्ड में, और बाकी के मेल रिपोर्टर्स या मेल जर्नलिस्ट कैसे ट्रीट करते हैं उन्हें. एंड मैंने खुद भी चूंकि इस शहर में काम किया हुआ है मीडिया में, तो मुझे अंदाजा था कि ये क्या बातें कहनी है. सो आज बस मैंने स्टेज पे इतना बोल दिया कि ये जिस प्रेस क्लब के सामने हम खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे औरतों को इज्जत नहीं दी जाती है, उनका एहतराम नहीं किया जाता है, उनकी काम की वजह से उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, बल्कि उनके लिए माहौल और भी बुरा बनाया जाता है. इस पे हमारे प्रेस क्लब के ओहदेदारान इतना ज्यादा खफा हो गए कि अब just me या Laiba lag हो रहा है? Yeah, it's breaking up. I don't know if it's just me. No, it's breaking. मुल्तान में वाईफाई. Till that happens, Ekta Shaikh has also joined us. Hi Ekta, how are you? Hi. Can you guys hear me? Yes, Yeah. we can. I can't really hear anybody, and the voice is like super I think Laiba का internet का थोड़ा कुछ issue आ रहा है. Oh, okay. Can you say something, Shehzad? Something. Ekta, we are live. People are watching this right now. तुम्हारा mic test जो है ना, ये live Sorry. दुनिया को जा रहे हैं. Right now the viewers are watching your mic test. Sorry. So I think Laiba का disconnect हो गया. So anybody who wants to jump in, या Ekta, if you want to I start. want to say something kind of shady, like, and I also want everybody on the panel to correct me if I'm wrong. That will just be the general sentiment throughout. But was it, at least for Karachi, I feel like a lot less people who come for photo ops showed up this year. In general, lot less people, but specifically those who just come for photo ops, and I mean a very, very particular segment of society that comes and थोड़ी तस्वीरें लेके वो लगा देते हैं, और वो उसकी attendance बहुत low थी कराची में in particular, and I really want to know how we all feel. Can I say something over here about this photo op thing? Like, please, there's no such, like, I think it's good that you voiced that, because so this year, I mean, I can only speak from जो हमारा जलसे का experience था. We were a lot less vocal on social media. हम लोगों ने पिछले साल तो I think we kind of went all out as far as our social media campaign was concerned, and बहुत ज़्यादा हमने illustrations कराई थी, and I mean उसके repercussions भी हुए थे, because हमारे main poster पे भी there was a Baloch woman, for instance, right? And I mean, you know, there was something obviously very insidious at play जब ये blasphemy cases और ये सब कुछ भी हुआ है. So this year, I mean, it was also about us thinking about how we want to think about feminist politics beyond photo ops, beyond the optics of a march. And I mean, a lot of us are of the belief, like kabhi kabar hum sochte hain ki, you know, like maybe we need to make feminism uncool again. And I think the jalsa in that sense was very uncool, in the sense that our primary goal was not to obviously appease people जो बस basically एक साल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. And I don't mean people like who genuinely obviously show solidarity towards the march, but you know, people who perhaps
don't understand that like feminist work is not just about that one day. It happens year round, and you don't have to be an organizer to do that. You could do it online, you could do it through, you know, like writing, you could do it through, I don't know, performance, through film, whatever. But इस साल थोड़ा सा हमें ये भी था कि अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं ये करते काम और ज्यादा फोकस मोबिलाइजेशन पे, और जो हमारा ऑलरेडी मतलब ऑन ग्राउंड जिद्दोजहद है उस पे करते हैं, तो व्हाट्स गोना हैपन. एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प, बिकॉज ऑब्वियसली आप सबको पता है कि मार्च का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये रहा है कि ये तो सारी एलीट औरतें आती हैं और मार्च करने आ जाती हैं और ये पता नहीं क्या अपर क्लास वुमेन एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली डिट्रैक्टर्स से दैट about feminists के बस elite का इल्जाम लगा दो, you know, because that's so easy to do. Obviously it's like patriarchy doesn't affect women at all, and I mean we know that that's something that cuts through class. But apart from that, obviously representation and you know, the kind of people that you see at the march, like that is obviously something that's come into question, and that's something that all of us as feminists obviously need to reflect on. So हमारा इस बार यही था कि हम लोग एटलीस्ट जलसे के थ्रू ज्यादा फोकस यही करें कि लोगों को एटलीस्ट जो स्पेशली मीडिया को देख के भड़क जाते हैं कि पता नहीं इस औरत मार्च या पता नहीं अब इस जलसे पे क्या होगा, उनको हम समझाएं कि ये प्लैकार्ड्स का मतलब है, ये बेसिकली हम लोग बात करेंगे, हमारा मंशूर है, ये हमने डिमांड्स करनी है. इस साल खैर हमने डिमांड्स भी वैसे क्राउड सोर्स की हैं, वी हैवंट पुट अप द डिमांड्स येट, बट इससे ये हमें फायदा हुआ है कि बेसिकली जो जलसे में लोग आए हैं कि अच्छा ये तो फिर तमाशे करेंगे, हम ये कवर करेंगे, वो करेंगे, वो जरा बेचारे आके कंफ्यूज हो गए बिकॉज दे सॉ लाइक अ लॉट ऑफ वर्किंग क्लास कम्युनिटीज, यू नो, मतलब जिस तरह H9 की आबादी है जो एक्चुअली अभी बेचारे एविक्ट भी होने वाले हैं बिकॉज 10th एवेन्यू इस्लामाबाद में बन रहा है, दैट्स अ होल थिंग हैपनिंग. और G11 की आबादी और अलीपुर फराश से लोग, गुलबर्ग ग्रीन से लोग, ये सारे अपने बच्चों के साथ आए हुए थे. एंड दे also, because we were talking about the city and how cities are not equal or like made or perceived equally for everybody. I think that really sort of, you know, like made kind of, I guess, like the message of feminism very clear to people who perhaps had some questions, because obviously like कुछ तो backlash, मतलब जो लोग मतलब right wingers होते हैं या incels होते हैं जिनका होता है कि बस ये एमी बस इनकी फेमिनिस्ट्स के पीछे पड़ना है, कुछ लोग एक्चुअली genuinely confused हैं, because I mean let's face it, we don't have a huge base of people where at right now at best like a lot of middle class women, a lot of middle class queer people, you know, ख्वाजा सिराज चलो from the working class हमारे साथ हैं, but I mean obviously like when it comes to organizing, like the more people we are, I think the more we can take on, I would say even the state, even like, you know, the right wing, because we know that like numbers की game में the right wing wins. So I do think कि जहाँ तक ये photo op वाली भी बात है, I think perhaps that's something that gives us perhaps food for thought as feminists के हम क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, जो सबका obviously है कि हम आलमी दिन पे अपने आएं और you know अपनी बात आगे रखें और सेलिब्रेट भी करें और हमें catharsis भी मिले and all of that, but हम इस जिद्दोजहद को किस तरह से आगे बरकरार रख सकते हैं so that our future generations, be it from like, you know, our own families or like people like from other communities, like how do we make this collective work that everybody takes responsibility for? I don't know if that made sense, but that's just something that we've been thinking about a lot this year and we're just trying to work on it and make sure that this time we don't focus too much on the backlash. Hopefully शायद बच्चे तो अच्छा अल्लाह करे, लेकिन हम इस काम को किस तरह से बरकरार रखें ताकि सिर्फ 20 लोग नहीं रियासत के साथ लड़ रहे हो या ट्रोल्स के साथ या राइट विंगर्स के साथ लड़ रहे हो, ताकि एक प्रॉपर एक बेस हो हमारी जिसका क्लास कैरेक्टर भी ऑब्वियसली हमारी मूवमेंट की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे. शॉर्ट टर्म गोल दिए हैं, FIR 2 पेज की दो, इतने लोग तो कम से कम. मिशा खान चैट में स्पेसिफिकली जोया से सवाल पूछ रही है कि डिड द PPP जलसा अफेक्ट अटेंडेंस इन द औरत मार्च? आई हर्ड इट डिड. So there was a march today. I'm an organizer from Aurat March. हम लोगों ने जलसा संडे को किया था, आज मार्च हुआ था. मार्च बेसिकली जो किया था उन बेचारों के साथ वाकई काफी मसले हुए हैं बिकॉज उनको आगे सही से मार्च भी नहीं करने दिया था. अपेरेंटली उनके माइक्स भी ऑफ कर दिए गए थे एंड आई थिंक उनके पीछे हया मार्च हो रही थी, उसके बाद भी कुछ ग्रुप्स आए और ऑर्गेनाइज कर रहे थे उस प्रोटेस्ट स्पेस पे. तो वो जो उनका मकसद था कि भाई हमने इस स्पेस को, जो हमारी स्पेस जो हमने ऑब्वियसली पोलिटिसाइज की है, इसको हमने नहीं सीट करना.
and obviously like they have every right to do that, right? Like हम लोगों ने this time we were like अच्छा we want to focus more on perhaps mobilization, so we did the jalsa, but उन बेचारों के साथ वही कि मतलब स्टेट ने बेसिकली like जगह जगह उनके खिलाफ जो है मतलब लोग एहतजाज कर रहे हैं, एंड लिटरली वही कि वो लोग उनके मुंह देख रहे हैं, ये मार्चर्स को उन्होंने एनओसी नहीं दी। वही जो मैं पहले बात करी थी बिफोर लाइक सना लाइबा एक्सेट्रा जॉइंट, के स्टेट का काम वही है कि हमारे मूवमेंट का काम डाइल्यूट करे और बस शक्लें हमारी देखें, और अगर कोई पत्थर फेंकता है या गालियां देता है या मीडिया से कोई बदतमीजी करता है तो बस मतलब वो कुछ ना करें, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि हमें मतलब चलता चलता करें कि भाई बस ठीक है 4 बजे खत्म करो, 4:30 खत्म करो, बस जल्दी जल्दी अपना प्रोग्राम खत्म करो टाइप। सो ये तो चीजें मतलब हुई हैं। इसके अलावा कंटेनर्स जगह जगह लगे हुए थे पीपीपी की वजह से। तो शहर में मतलब मुझे तो पीपीपी भी समझ नहीं आ रही यार, आपको पता है क्या, मतलब आप एक आध दिन इंतजार कर लेते। पिछले साल भी इनकी कोई पता नहीं पीडीएम की कोई कांग्रेस थी या कोई मीटिंग थी, एंड बेसिकली मतलब वही जगह जगह अगेन लाइक रोड्स ब्लॉक हुई हुई थी। I mean, I hold these like parties responsible for that as well, कि आपको पता है कि आज 8 मार्च है, बड़ा अपनी तरफ से बिलावल जो है ट्वीट कर रहा है सपोर्ट, फायदा क्या है, लोग आ ही नहीं सकते मार्च पे, आपको नहीं पता औरतों ने आज निकलना है। सो ये तो एक भाई प्रायोरिटीज की गेम है बेसिकली, एंड आई मीन ये जो आपने भी बात की ना जोया, जो आपने भी बात की ना रियासत की तरफ से जो इश्यूज होते हैं, इट्स वेरी फनी, क्योंकि कल हम लोगों को बुलाया गया और हमारे तो जो मेन ऑर्गेनाइजर्स थे वो डीसी ऑफिस में गए और उन्हें ये कहा गया, क्योंकि हमने मार्च का टाइम 1 बजे अनाउंस किया था और हमारा एनओसी 1 से 6 बजे तक था, तो उन्होंने कहा कि आप 10 बजे मार्च करें और 12 बजे खत्म कर दें। तो वी सेड इट्स नॉट पॉसिबल, वी हैव अनाउंस्ड, एवरीबॉडी नोज, एंड देन दे वर लाइक नहीं आपको ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पास में एक मस्जिद है, तो आपको थ्रेट है कि वहां से लोग निकल के आएंगे और अटैक करेंगे। आई मीन कम ऑन डूड, लोग आके निकल के अटैक करें तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अस। तो फिर वो आगे से कहते हैं देखिए हम 600 बंदा लगाएंगे आपकी मार्च के लिए। मुल्तान की मार्च में 600 बंदा नहीं लगता प्रोटेक्शन के लिए, इट्स अ वेरी स्मॉल मार्च एज कम्पेयर टू बिगर सिटीज। एंड देन दे सेड कि अगर उस टाइम पे कोई मेजर चीज हो जाती है शहर में और कोई मेजर क्राइम हो जाता है तो हम एफआईआर आपके खिलाफ काटेंगे। मतलब आप तो इंटिमिडेट कर रहे हैं, आप थ्रेट कर रहे हैं एज अ स्टेट, आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। आगे से वो कहते हैं कि यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ भी वल्गर नहीं होना चाहिए। आज वो सुबह साहब आए हैं, एसी साहब, और आके मुझे कहते हैं, मैं लाइक वी वर बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग कि हम लोग ने स्टार्ट करने वाले थे, वी वर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, वी वर टेलिंग एवरीवन कि हमने ये करना है ये करना है ये करना है, एंड आई दैट पर्सन कॉल्ड मी लाइक 3 times वाया हिज पीए और व्हाटएवर, एंड उसने मुझे कहा कि देखें आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्लेकार्ड्स सारे जो है ना वो आप पढ़ें। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ और हुक्म करें। तो उन्होंने कहा कि जो भी कोई ऐसे मतलब पिछली दफा भी कुछ ऐसे अनासिर आए थे जिन्होंने कुछ गैर जरूरी कार्ड्स उठाए हुए थे, तो इस दफा यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसे गैर जरूरी कार्ड्स ना हो। मैंने कहा सर मेरी गुजारिश ये है कि गैर जरूरी तो कोई कार्ड नहीं है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं सारे प्ले कार्ड्स पढ़ लेती हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर मुईज जमान थी, तो शी आस्क्ड कि सर बस ये बता दें कि कौन से कार्ड रोकने हैं, like define क्या कर रहे हैं आप, and he said it should be modest. I was like, how do you define modesty? How do you make sure that your definition of modesty and my definition of modesty is the same? और फिर पूरी मार्च के दौरान भी उनका ये था, they kept saying कि बस कर दें, बंद कर दें, टाइम कम है। टाइम कैसे कम है? I do not understand. आपने 6 बजे तक का एनओसी दिया है हमें और आप 3:30 बजे मुझे कह रहे हैं कि मार्च खत्म कर दें। पहला मैसेज उन्होंने भिजवाया कि 3:15 बजे मार्च खत्म कर दें। और फिर उसके बाद वंस दैट मार्च एंडेड, तो जो मैं बात मीडिया वालों की बता रही थी वो ये थी कि उन्होंने इतने सारे मैसेजेस भिजवाए कि जी आप प्रेस क्लब में आए, प्रेस क्लब में आपसे बात करनी है बात करनी है बात करनी है। मैंने कहा जी ठीक है कर लेते हैं। अब हाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स वर बिजी पैकिंग करवाने में हर चीज की कि हम लोग वाइंड अप करें वहां से सारा, और वो रोड जो है ना ट्रैफिक लिए कम्प्लीटली खोल दी जाए। तो मैं और डॉक्टर मीज वी वेंट टू द प्रेस क्लब, एंड देयर इज दिस गाय हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रेस क्लब राइट नाउ, एंड ही वाज सो ऑफेंडेड कि मैंने स्टेज पे खड़े होकर ये बात क्यों की कि यहाँ खवातीन सहाफियों के लिए बहुत मसाइल हैं, हमने ये बात क्यों की कि जी प्रेस क्लब इज नॉट अ सेफ स्पेस। मुझे कहते हैं देखिए हमने खवातीन के लिए कमरा बना दिया और उसमें अलग बाथरूम भी है, जैसे बहुत एहसान किया है मेरी जात पे। मैंने कहा सर देखें प्रेस क्लब की बिल्डिंग में ना सिर्फ एक बाथरूम और एक कमरा देने से वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं हो जाता है, वो सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाता है। फिर कहते कि आपको तो मसला इसलिए है ना क्योंकि आपको मेंबरशिप नहीं मिली। मैंने कहा मुझे आपके इस घटिया किस्म के प्रेस क्लब की मेंबरशिप चाहिए भी नहीं है, मैंने
अपने लिए नहीं की थी, मैंने ये बात उन लोगों के लिए की थी जो यहाँ इस शहर में जो काम कर रही है, जिनके बारे में आप उनके पीठ पीछे कभी कभी उनके मुंह पे भी उनको गालियां भी दे रहे होते हैं, उनको कैरेक्टर असैसिनेट। देन दे सेड ठीक है हम आपको एक ओहदा दे देते हैं। मैंने कहा मैं आपको कह रही हूँ मुझे आपकी मेंबरशिप तक नहीं चाहिए, मैं आपके प्रेस क्लब का ओहदा क्यों लूं। एंड देन देयर वाज दिस अदर पर्सन जो उनके मजलिस से आमला का पार्ट है, ही सेड के हमने आपकी आवाज आके पहुंचानी है, आप हमारे खिलाफ बात करेंगे तो हम तो आपकी आवाज नहीं पहुंचाएंगे। मैंने कहा इट्स ओके, आप ना पहुंचाएं, आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट, क्योंकि अब हम आपकी मजबूरी है, आप हमारी मजबूरी नहीं है। मेरी तरफ से सारी फुटेज डिलीट करें, सारी पिक्चर्स डिलीट करें, खबर में से के लिए आपने जो कुछ नोट किया वो भी डिलीट कर दे, आप ना चलाएं इसको कहीं भी, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। नो औरत मार्च मुल्तान को इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला है। ओके तो उन्होंने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, and it was so bad that Dr. Muiz and I decided that we will not be aggressive a lot, especially she was of the point that we shouldn't be, but उन्होंने इतना ज्यादा इंटिमिडेट किया और इतनी गलत बातें की, इतनी घटिया बातें की, that ultimately she started shouting कि आप कह रहे हैं कि हम औरतों की इज्जत, जितनी इज्जत औरतें खुद अपनी करती हैं उससे भी ज्यादा करते हैं, और इस टाइम आप 11 मर्द एक खातून को बिठा के इस कमरे में इंटिमिडेट कर रहे हैं और उसको हरास कर रहे हैं ये सारी बातें करके। एंड देन दे वर लाइक अच्छा आप हमें मशवरे दें, आप हमें सजेशंस दें कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप उस खातून का नाम बताएं जो इस शहर में सहाफी है और जिसने आपको ये सारी बातें बताई हैं। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब है, मैं आपको नाम बता दूं उसका। And just when the march started, there was this very young reporter who has recently joined the media. And all of these people were talking about her figure, were talking about the way she was looking, were talking about her body parts. And then they said कि हम औरत की इज्जत जितनी औरत अपनी इज्जत करती है उससे भी ज्यादा करते हैं। तो ये तो हमारे मीडिया के हालात है, इतने तो ये घटिया लोग हैं। और फिर उनको ये तकलीफ, and then I just got some screenshots of men only groups, by men only I mean के वो ग्रुप्स जिसमें सिर्फ मर्द सहाफी हैं, जिसमें मेरी तस्वीरें शेयर की गई हैं और मेरे बारे में जो घटिया गुफ्तगू हुई है वो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं ना बोलूं। उनकी इज्जत बचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बट वो बातें इतनी घटिया हैं। एंड दे ऑल्सो सेड कि आप तो असल सहाफी नहीं है ना, आप तो ब्लॉगर हैं। मैंने कहा देखिए आप ना जाके ब्लॉगर और फ्रीलांस जर्नलिस्ट दोनों की डेफिनेशंस में फर्क पढ़ लीजिए, जब आपको पता लगेगा ना कि इनमें फर्क क्या है तब आके मेरे से बात कीजिएगा। एंड देन ये अगेन सेड नहीं असल सहाफियों को तो मेंबरशिप मिल जाती है। मैंने कहा जी मेरी जूती की नोक पे आपकी मेंबरशिप, मेरी जूती की नोक पे आपकी कवरेज, दोनों वहां से उठा के ले जाइए। एंड फिर जैसे ही हम लोग निकलने लगे, क्योंकि उन्होंने 3-4 दफा हमारी कन्वर्सेशन को टोक के कहा हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जाना है। मैंने कहा तो फिर आपने बुलाया क्यों है, आप जाएं, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं थी आपसे बात करने में। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप एक तस्वीर तो खिंचवाएं ना हमारे साथ, आप एक तस्वीर तो खिंचवाएं। मैंने कहा जी मेरा कॉन्सेंट नहीं है, मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहती हूँ। तो एक और भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तस्वीर तो आपको खिंचवानी पड़ेगी। मैंने कहा एथिकल जर्नलिज्म की पहली शिक ये है कि कॉन्सेंट लेना चाहिए, मेरा कॉन्सेंट नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कह के मैं निकल गई। और अब मैंने HRCP में एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की है इन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट कि इन्होंने इस तरह से हमें बिठाया, ये बातें की और ये सब किया। तो इफ दैट गोज एनीवेयर आई लेट ऑल ऑफ यू नो। बट एक अच्छी खबर ये है और खुशी की बात ये है जिसपे हमने बहुत सेलिब्रेट करना है अभी, कि दिस वाज वन ऑफ आवर बिगेस्ट मार्चेस। वी हैव 500+ पीपल और हर कम्युनिटी से लोग आए, हर कम्युनिटी से, जहाँ बहुत ज्यादा नफरत भी थी, लेकिन आई थिंक आज का दिन काफी सेलिब्रेशन भरा भी था। हमने बहुत एंजॉय किया एक दूसरे की प्रेजेंस को। एंड जो पिछले 2 साल में हमने बहुत स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था, एंड वी मेड श्योर कि हम किसी भी मर्द को आके स्टेज पे बोलने की इजाजत ही देंगे, इस साल हमने ये शर्त चेंज की एंड वी सेड यू नीड अ वुमन just beside you saying the same words if you want to say something on our stage. But it went really well, and I am really proud of Jodat and Anam and Noor, because these were the 3 people जिन्होंने सारा on ground work किया है, सारी mobilization की है। and अगर ये लोग ना होते तो औरत मार्च मुल्तान का होना ही possible नहीं था इस साल।
Well done, Laiba. ये जो लोग ऑनलाइन बकवास करते हैं ना कि I saw, by the way, even people जो posts and शुरू pictures सालों from में afar. It looked amazing. Yeah. Like the Multan March I looked know, fantastic. all I wish of I was those there. were Thank fantastic. you. Thank you so much. मुल्तान, ये जो लोग शुरू में भी बकवास करते थे ना एंटी औरत मार्च से, वो भी just because of all the work that you guys have put in. I know it's exhausting and it seems like the world is against you, but even जो लोग शुरू में डिफेंस की आंटियां आ गई हैं, अमीर आंटियां आ गई हैं एंटी औरत मार्च से, now I see them attending औरत मार्च, so there is change that's happening. Great, Laiba. अगर हम इसको थोड़ा सा बस एक मैक्रो पर्सपेक्टिव ले लें, because Maria and I got into this conversation right before, and it's also this idea कि ये औरतें जो हैं, ये औरत मार्च वाली बगैरतें, हम हया मार्च करेंगी. सबसे बगैरत बात इस साल हुई हया मार्च से. And Maria and I were discussing it, and I'm sorry if it's quite heavy for this discussion, but I think it needs to be said कि हम कितने fucked up, कि मतलब humanity का हमारा ये level आ गया है where Noor has now become a punchline for them. अब वो मैं ये कहते हैं कि ये औरतों को प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, आपके जो पॉलिटिकल बिलीफ्स है, आपको जो लगता है इस्लाम कहता है, क्या आपको लगता है कि एक औरत का सर काटना इस्लाम कहता है? एंड फॉर यू टू स्टैंड ऑन स्टेज एंड इनसाइड दैट वायलेंस at a march called Haya March, where you're pretending to protect women, fuck off, literally. I'm sorry, but seriously, sorry, Maria. No, exactly, fuck off. क्योंकि मुझे जो चीज अजीब लग रही थी ना, okay, the fact कि हमारे मुल्क में polarized politics है, ये कोई नई बात नहीं है, ये किसी के लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है. The fact कि एक हया मार्च हो रहा है, I don't think वो भी किसी के लिए सरप्राइजिंग बात है. That's fine. बट अगर आप हया के नाम पे ये कह रहे हो, मतलब आप हया मार्च निकाल रहे हो और एक खातून कह रही है कि जो औरत मार्च की औरतें, उनके साथ वो होना चाहिए जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ है, और वो औरतें कह रही हैं दूसरे मार्चेस में भी कि हमें इन पे डंडे बरसाएंगे, तो मतलब आपकी भी हया की डेफिनेशन क्या है? मतलब आपकी अपनी पॉलिटिक्स के तहत, आपकी अपनी रिलीजियस पॉलिटिक्स के तहत आपकी हया की डेफिनेशन क्या है? बिकॉज आप हमें तो चलो कह रहे हो ना कि हम तो उस दायरे से ही बाहर हैं और हम तो खराब हैं और हम फौहश हैं और जो भी हैं, हम वो हैं. आप क्या है? बिकॉज द फैक्ट कि आप जिस नाम पे ये बातें कर रहे हैं, हया के नाम पे, और आप ख्वातीन हैं और आप ये बातें कह रही हैं कि एक औरत, इन सब औरतों के सर कटने चाहिए और इनके रेप होने चाहिए, दैट्स एसेंशियली व्हाट यू आर सेइंग. तो मतलब आपकी अपनी पॉलिटिक्स क्या बन चुकी है और आपकी अपनी हया क्या है? क्योंकि मुझे जो चीज बहुत ही लाइक आई जेन्युइनली वाज, मतलब द फैक्ट दैट एक हेट्रेड होगा या वो कहेंगे कि ये औरतें खराब हैं या इनकी वो चीज, दैट वुडंट सरप्राइज मी. बट द फैक्ट दैट आपकी अपनी डेफिनेशंस इतनी ट्विस्टेड हैं कि आप वायलेंस और रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं इन द नेम ऑफ हया मार्च, दैट इज काइंड ऑफ really terrifying. तो पता नहीं अब उसका बंदा क्या करे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप सबने स्टोरी सुनाई है ना, like from what I've heard, वो मैं सिर्फ यही सुनती हूँ बार बार. The only thing that gets reinforced, I think, is कि अभी भी वो जो मतलब स्पेशली जो जर्नलिस्ट वाली बात है, I wish I could give you a better message, but I've worked as a Pakistani journalist and I've worked in human rights specifically. तो sadly intimidation is the currency. Intimidation एक बड़ी basic चीज होती है. आप जो especially इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट्स के लिए, आप इंटरव्यू भी किसी का कर रहे होते हो ना, तो अगर वो औरत होती है तो आप उसका जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, मतलब किसी का अभी कोई मरा है तो आप उसके मुंह में माइक घुसेड़ के कहोगे आपको इस वक्त कैसे लग रहा है. What news value is there of finding out कि उसे किस तरह लग रहा है कि उसका बेटा मर गया है? Like हमारी वो मीडिया का मकसद वो है. And so I think the biggest problem they have with the new guidelines of the Aurat March is that they don't get to do that anymore, because उनके लिए जो आपके आगे reactions हैं ना, वही उनके TRPs हैं. उनके TRPs ये हैं कि हम इन्हें इंटिमिडेट करेंगे, फिर ये आगे से बोलेंगी और हम कहेंगे कि देखो ये किस किस्म की औरतें, ये आगे से चीखती हैं, ये बोलती हैं. That's all they want. And the fact that they're not getting that, they're literally not getting content, because they're not going to put out your actual manifestos and your actual content. That is not part of the show they are trying to do or what they've been sent to do. तो ये शिवाली ने चैट में लिंक भी भेजा है, बिकॉज मारिया स्पॉट ऑन. ये कोई चैनल है लाहौर रंग, व्यूज भी इनको चाहिए, पैसे भी कमाने हैं, और
पर्सनल इनकी जो पॉलिटिक्स कुछ भी हो, आई मीन इफ यू आर सपोर्टिंग ट्रांस पीपल, यू नो खुसरे इज अ डेरोगेटरी टर्म, इट्स अ स्लर. खुसरे भी अपना हक लेने निकल आए सड़कों पे. आपको व्यूज भी चाहिए, औरत मार्च से आपने कमाना भी है और फिर उसी को गालियां भी देनी है. सो लॉट ऑफ दीज जर्नलिस्ट डिलिबरेटली डू इनसाइड टू गेट अ रिएक्शन, ताकि वो रिएक्शन की क्लिप वायरल हो जाए और वो उसकी वजह से फेमस हो जाए. जोया, यू I वांट want से? to bring up something over here. मेरे साथ ये पिछले साल हुआ था. ये कोई दया पाकिस्तान टाइप ये यूट्यूब चैनल था और इन लोगों ने बेसिकली प्लेकार्ड्स वगैरह, एंड दे वर रियली तमीज़दार इनिशियली. तो वी वर लाइक ठीक है, मतलब आपने एज लॉन्ग एज अप्लाई किया है सारा, आप देख लें सारा जो भी आपने मुआयना करना है जब तक मार्च नहीं शुरू होता. एंड मेरे पास आए हैं एंड ऑब्वियसली लाइक आई न्यू व्हाट आई हैड टू से, बट वो बंदा लिटरली कोई 30-40 मिनट का उसने मेरे साथ इंटरव्यू किया, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था. एंड he was constantly trying to sort of trap me in the sense कि वो बार बार blasphemy की बात पे कि ये इस्लाम के खिलाफ है. Like he was trying to touch a nerve कि basically मैं कुछ गलत कह दूँ. And you know, but I think, I mean, even though honestly I'm terrible with media interviews, I think I held my own. And वो उसने interview as it is लगाया, but obviously because the questions were inflammatory, वो जब उसने interview लगाया उसके नीचे कोई हजारों comments and people calling me everything from an international गश्ती to God knows what else. I mean I don't know how I was international, वैसे पता नहीं, ये मतलब locally scene था एक शहर में, capital कह सकता था, but anyway like वो मतलब उसके बाद जो trolling शुरू हुई है and फिर लोगों ने मुझे मतलब अजीब like मुझे call, like it was really weird, like people were trying to like hack into my like Facebook and you know like मुझे Twitter पे like मेरा account report होना शुरू हो गया था. And it was really really scary. And वही बात है कि again they also know that they are not only going to get like content for their channel, but they will actually do something to potentially put the people get the people who they're interviewing in trouble. I don't know कि उनके दिमाग में ये compute होता है कि भाई मतलब लोग मर सकते हैं. I hope होता हो, क्योंकि मतलब where the fuck is your ज़मीर. But at the same time it's just मतलब clearly like there's something sinister at play. वो आते चुतियाप साड़ नहीं है, to sorry for my language, but हमारी yeah, रेगुलर लिसनर अनम बटे वो चैट में कह रही है व्हाट मेड मी सपोर्ट औरत मार्च, एंड फॉर पर्सपेक्टिव she comes from a really conservative background. What made me support Aurat March was how threatened it made everyone feel. If 100 women on the road can make millions of men and women, modern and Maulvi combined, feel threatened, there is something more to it. Yeah. Ekta, you haven't said anything. Thoughts? आपका फैन क्लब चैट में वेट कर रहा है. No, I feel like I was just thinking like this is the second Aurat March that I haven't gotten a chance to attend because I'm over here for college, and I feel like the more I don't attend an Aurat March, the more like detached I feel from like what's actually happening, which I was kind of like lamenting in my mind right now. But yeah, but I also see a lot of change like it's interesting, like I kind of agree with what Sajeer is saying, because my consumption last year of Aurat March has just been through people putting posts on social media. And I mean, I also am aware of the kind of people that I follow and that follow me. And that's very like a specific class-based wokeness है वो. जो word woke use करते हैं, let's put it like that. And I haven't seen any of that this time around on my profile. Like I haven't seen any of that content or any of those things. So I guess I was also thinking about like, एक तो why, because I feel like एक आपको, I mean if I was to look at it from the woke mentality, तो आपको एक like photo आपका मौका इसमें मिल जाता है या एक Palestine वाली चीज में मिल जाता है, तो they usually participate. So I guess I was just thinking about the lack of participation this year. And then I was also thinking about whether that participation is significant or not, because I mean photo op pictures kiska, like who are they speaking to, who are they benefiting? And I also feel like in terms of usually like actors and people that go, like you see quite a few of them, right? But like this time it was those individuals only jo all year round active hote hain, like in terms of their activism. It wasn't like, I mean I didn't see a Myra Khan or anything, not that we're allowed to take names, but like generally like वो जो एक साल में एक दफा wokeness वाले लोग होते हैं, I didn't see those people either. So I guess I was just wondering if that has more to do with how radical the politics is becoming, like the grassroots politics itself, like post like the fall of Kabul and everything. I guess I was just thinking if it's that, or if it has more to do with how the Aurat March itself has presented itself
for this specific year? May I answer that question? Sorry, at least start because I am itching too. I'm sorry. Like this is something I think about a lot. Obviously, like I do feel that with feminism, like it's also kind of at this interesting crossroads. And obviously, there are all kinds of feminists, and disagreement is what I guess makes the movement thrive, right? And I mean, feminism has become like a thing for. I feel that there's a lot of social capital, or at least there was a lot of social capital attached to like calling yourself a feminist. I mean, we know what men have to, like how they benefit from this, but I mean, it's also like co-optation, like on the part of corporations, celebrities, brands, the works. So obviously, मतलब अब आपने देखा है कि women's day पे कितनी मतलब लोग branding उस से अपनी कर रहे होते हैं, discounts जैसे Valentine's Day के साथ मतलब commercialized तो चीजें होती हैं. And I mean, I've seen this in like when I was studying in London, मैंने वहाँ देखा था, like वहाँ तो बहुत commercialized scene था. Honestly, props to like औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स अक्रॉस पाकिस्तान. अभी तक वो जो मतलब उनकी एंटी कॉर्पोरेशन, एंटी सॉर्ट ऑफ एनजीओ पॉलिसी है कि हम किसी को भी ये स्पेस को ऑप्ट नहीं करने देंगे. दिस इज गोइंग टू बी इंटायरली वॉलंटियर रन, वेयर अ कलेक्टिव ऑफ पीपल, वी हैव नथिंग टू गेन फ्रॉम दिस. इफ एनीथिंग मतलब हमें गालियां खाने को भी पड़ती हैं. मतलब वो डटे रहे हैं. सो आई फील दैट ऑब्वियसली लाइक देयर इज अ टाइम व्हेन पीपल विल make that effort to try and co-opt the message of feminism. And I guess उनको भी समझ आ गई है, मतलब क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे लोग क्रिटिक भी बहुत, मतलब इट्स सो सच अ डेमोक्रेटाइज स्पेस के क्रिटिक लोग कर लेते हैं. ऑब्वियसली लाइक ब्रांड्स वगैरह के कॉल आउट हो जाते हैं, तो अब जाहिर है थोड़ा होपफुली थोड़े स्मार्ट हो गए हैं लोग कि भाई मतलब इस तरह से वो एकदम से मतलब अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते एज फेमिनिस्ट. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड. यू कांट जस्ट कम एंड क्लेम दैट you've done the work or somehow like you're like ultra feminist or whatever. So I think number one, it's the like the pushback from feminists themselves, and not just organizers but like everybody, right? And I think apart from that, you're right कि एक बात feminism एक ये भी है क्योंकि feminism is about interlocking oppressions. I mean, yes, it's about gender justice, but it's about class, it's about ethnicity, it's about sexuality, it's about even religious like marginalization. I think कि बहुत सी चीजें लोगों को खटक रही हैं. मतलब कुछ लोग जिस तरह कहते हैं कि भाई like I don't know, like religious minorities की बात पे कुछ लोगों की bigotry निकल आती है, या ethnicity पे I know कि a lot of people present like very very sort of bigoted views. तो अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता I think थोड़ी समझ आ रही है. कुछ लोग डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को, कुछ लोग एक्चुअली साथ दे रहे हैं because they get the message. So that kind of interesting shift is happening whereby people are actually reflecting upon like what the movement means on a whole, what kind of messages are out there, and I think what the social media discourses and what the kind of discourse that obviously the marches have created. So I think that it's feminism is at a very critical juncture right now, I feel, which is, I don't know if that answers your question, but this is something I think about when I think about like the optics of feminism. So yeah, and I definitely do think you mentioned social capital at the start, and I definitely do think there's more social capital attached to feminism in places like the US or the UK. Like for example, capitalistic feminism in itself is like a whole category of like analysis and category of performing feminism. I do think that like in Pakistan, the social capital attached to it isn't quite the same, just because of like the whole Western agenda-esque image that like a label like feminism has, which I mean, besides Western agenda, I also think that like just given the history of the term, it also has a very colonial history. The word feminist itself has a colonial history. So I think like in terms of like, and I guess this is just my opinion, I don't know, but like in terms of feminism sort of moving into the everyday vernacular of an everyday individual who doesn't have to be woke, who doesn't have to be from a specific socio-economic background, who just is. Like, for example, I want to be able to talk to my domestic help about things like feminism with a word and with diction that she understands, right? So in doing that, I feel like have organizers or have like people who participate and create the discourse around this spoken about how to sort of make it more indigenous, so it's more ab jaise haya march hai, matlab come on, like haya march, like it's such a simple, you get like they're playing on the whole identity politics of things, and the only way that they create it in opposition to something like aurat khair hamara hai, hum aurat march to keh rahe hain, but I feel like the association with feminism, like
I feel like until we detach our association with the word feminism and present it as something same but differently packaged, I guess, similar rather, but differently and contextually and historically packaged, do you think it can sort of seep into everybody talking about it? And क्योंकि अभी तो बहुत एक oppositional feminism के around हुआ है ना, like 5 साल से, I was talking to Sajeer about this in a different live also, कि 5 साल से मेरा जिससे मेरी मर्जी पे ही झगड़ा हो रहा है, मतलब get over it, like, you know, move the discourse forward in some way or the other, get over the placards. So is there any way that the organizers sort of think about how we can change this narrative of like Western gashtiyan aa gayi hain around and like work on it in some way? Absolutely. Sorry, again, I'm just jumping in, but I think that just the fact that they talk about the history of feminism, and B, I think there's also this understanding among, I guess, like feminists of our generation that history can't ever be linear. Obviously, there's some, you know, like inevitable erasures, some inevitable silences. Matlab ab jis tarah a colonial history hai that obviously affects Khwaja Siras, for instance, right? Like their resistance has very much been working class. It's been very subversive. Then they've been out on the roads, on the streets. They've experienced state brutality, police brutality, you know, like general social opprobrium. But at the same time, they've been there, except that history really hasn't been documented to the extent that maybe the history of WAF or, I don't know, APWA has been documented. Similarly, मतलब बलोच खवातीन की जो जिद्दोजहद रही है, पश्तून खवातीन की जिद्दोजहद रही है, जो उनकी अपनी प्रोग्रेसिव तरीके रही हैं, जो मिलिट्री के खिलाफ जैसा काड़ा में जो खवातीन है उनकी रही है, मतलब we have pockets of resistance like across Pakistan, and I think there is this conscious effort that I see in younger feminists and in organizers also to highlight that feminism is very much rooted in our own context. Obviously ठीक है, feminism itself एक मतलब अंग्रेजी का लफ्ज है, but मतलब क्योंकि again मेरा women democratic front से ताल्लुक है, women democratic front में पूरे मुल्क की खवातीन है जिनकी अपनी मतलब कुछ सिंध से खवातीन है जो अपनी sort of local struggles में involved रही हैं, कुछ you know like बलोच खवातीन है, पश्तून खवातीन है, गिलगित से खवातीन है. So I think that again, like, because the movement is becoming more diverse, its base at least is becoming more diverse, that conscious understanding of decentering oneself, and by decentering oneself I mean like say like a person like me who's, I don't know, who got like went on a scholarship abroad, did her gender studies masters, came back, understands feminist theory, like जो भी मतलब वेस्ट में पढ़ाते हैं, like I think that it's really good that at least वो एक collective realization है कि we need to also step back and see, you know, like what all basically exists within like our sort of like Pakistani sort of, I don't know, like set of feminisms that perhaps has not gotten the kind of traction that it should have gotten over the years. Yeah, and I feel like, sorry, Sajeer? एक chat में एक सवाल आया हुआ है, if I can just ask that first, because हमारे fans हमें पैसे नहीं देते but सुनते like तो करते हैं जो भी सुन रहे हैं. नहीं रिदा का जो सवाल है, and I know the WAF, WDF, सारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल बहुत काम करते हैं, just because किसी को नजर नहीं आता तो उनको लगता है एक दिन बाहर आ जाते हैं, but it's an important question because a lot of people feel that way. रिदा पूछ रही है, what other effort at policy level does the Aurat March push forward apart from the annual march, because I couldn't come but I want to know how do they convert their charter demands into practical solutions. मैं तीसरी दफा बोलूं, does anybody else want to answer? I feel like I've spoken too much. No, go ahead. Go ahead first. Okay, तो so for अभी me, आप ही हमारे पास. Oh, no, I think so for me and for organizers in Islamabad, for us, it stems beyond policy. Like I think that the policy is a very, मतलब आप 100 चीजें मांगते हो आपको एक चीज मिलती है, और ये तो I think especially law और policy के इर्द गिर्द WAF नहीं actually इतना ज्यादा पिछले कुछ सालों में decades में काम किया है, and I think कि वही बात है कि हमें भी पता है कि लॉ तो आ जाता है लेकिन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में 600 मसले होते हैं. ऑनेस्टली लाइक जहां तक मतलब जैसा सेक्सुअल वायलेंस की फॉर इंस्टेंस बात है, खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ होता है, मैं 100 दफा सोचूंगी बिफोर गोइंग टू अ पुलिस स्टेशन. मतलब द लॉ इन इट्स लाइक द लॉ इटसेल्फ इज so key in exacting sort of, you know, like in meting out violence towards women and gender minorities. हमें पता है कि the law is inherently patriarchal, the law is inherently violent, and मैं ये नहीं कह रही कि उसके साथ बिल्कुल ना engage करें, हमारी
उम्र की काफी फेमिनिस्ट्स करती हैं, पुरानी तो काफी देर से बल्कि करती आई हैं, लेकिन वी हैव टू रियलाइज दैट लाइक पॉलिसी, यू नो, लाइक जनरल इंस्टीट्यूशनल सॉर्ट ऑफ लाइक मैकेनिज्म्स, दोज आर अ मीन्स टू एन एंड एट द एंड ऑफ द डे. वो बदलाव लाएंगे, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए बदलाव लाएंगे. मतलब अगर सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि सेक्सुअल हरासमेंट खत्म हो जाएगी. आई फील दैट सोसाइटल चेंज या जो एक जनरल शिफ्ट है जो माशरे में आना बहुत जरूरी है, उस पे काम करना हमारा काम है. हमारा काम डिस्टर्ब करना है, हमारा काम सोसाइटी को, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, अपसेट करना है कि ये हो रहा है, जागो. सो आई थिंक इसके अलावा मजीद लोगों को देखना है कि मतलब लोग आए और इस मूवमेंट में हिस्सा लें ताकि ये मूवमेंट बढ़े, क्योंकि वही बात है कि एंड में हम इतने ज्यादा लोग तादाद में हैं नहीं. सो आई थिंक कि पॉलिसी वगैरह वाला काम तो होता रहता है, लेकिन जो एक ये चीज है कि भाई मतलब आईना दिखाना कि भाई ये चीजें, ये मसाइल हैं, और ये लॉ की बात कर लें, किसी भी रियासत की बात कर लें, ये फिक्स नहीं होगे बिकॉज विल पावर, लाइक स्टेट की विल ही नहीं है टू फिक्स देम. या इवन अगर लॉयर है बेचारा कोई अच्छा प्रोग्रेसिव या फेमिनिस्ट, वो कोर्ट रूम में जाके जब जज ही पेट्रियार्कल होगा और जज को ही नहीं समझ आएगी कि भाई किस तरह से मतलब यू नो लाइक मतलब रेप को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, कंसेंट क्या होता है, तो फिर मतलब आगे हम क्या बात कर सकते हैं. सो आई फील दैट अगेन लाइक पॉलिसी के लेवल पे काम तो सालों से फेमिनिस्ट करते आएंगे, बहुत से हमारे में से लोग करते हैं, लेकिन दैट्स नॉट इट. I feel that again, like we need something that's more disruptive, that takes place in order for people to affect that change in their homes, within public spaces, the works. Ekta, I know you have your hand up, but I cut off Sajeer last time. I'm really sorry, Sajeer. Please go ahead. Yeah, but I just wanted to address a bunch of things. Somebody mentioned that there's a certain level of misogyny towards Haya March, and I think Shehzad said that. Yes, Sadaf Shehzad said that, and I think I kind of agree with that. I think कि हम जब हया मार्च की बात करते हैं, we're a little too critical of the fact that हया मार्च is a particular way. Do I 100% agree with everything that's said at haya march? No, but I think that the idea of even women who are participants of the haya march getting out and in a public space and speaking, that is the most important thing. Speaking, वो गलत बोल रही है, सही बोल रही है, उस पे थोड़ा बाद में आते हैं, बात कर रही है वो public space में आके. Where the point at which I disagree with Haya March is when they say things that are harmful to women as a whole. That is my point of contention. It's not that ओ ये वाली औरतें आ गई हैं, कोई ये वाली औरतें हैं ही नहीं, औरतें हैं, ठीक है. अब वो जैसी भी हो, all women are women. And it's great that they're coming out. It's only that one point of contention where you are perpetuating things that are stemming from a patriarchal setup that are the very basis of the things that Aurat March is trying to speak against. दूसरी मुझे बात linguistics ही करनी थी. जब I think Ekta said something about Haya March versus Aurat March, right? So it's so interesting to me that the word औरत itself has been demonized so much कि अब जब औरत मार्च होती है तो औरत मार्च होती है, you know, like एक ऐसा like ये औरतें आ गई हैं सड़क पे. पर जब हया मार्च होती है तो ओ हया मार्च होती है, wow, like women coming out on the streets and speak. I think that distinction is so important to look at when it comes to the language that is used when we talk about these things as well, right? Because I want to ask a question today, like अगर आज से औरत मार्च की सारी ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड कर लिया कलेक्टिवली कि अगले साल औरत मार्च को हया मार्च बोला जाएगा, how many Khalil Rahmans are going to show up to that march? How many Amir Liaqats, how many people who are at haya march are going to show up to that march? Because then say only na that your problem is not with the words that we are using, it is what we believe in. And the reason why you have a problem with what we believe in is because it takes away from the oppression that is the status quo that you are trying to keep in place constantly. Again, like Zoya is also saying some words like vulgar, right? What is vulgar to you? Like, how do you define vulgar? Because aapki jo, again, I'm going to borrow from what Zoya said about the idea of our colonial mindset. So much of everything you know is wrong because it's so colonial in the way that has been inculcated in the way that we've been brought up, in our mindset, in the things that we've been taught at school. So जब आप एक चीज बोलते हो जो कि आई थिंक मोइस ने भी बहुत दफा बोली है कि जब आप बोलते हो कि ये एक वेस्टर्न एजेंडा है, आपके साथ गेम हो गई है. The real western agenda is the way of life that you believe in right now.
So what then when we are saying that this is Western agenda और हम अपनी जो roots हैं जो जिन पे वापस जाना चाह रहे हैं एक ऐसे वक्त पे जहाँ पे औरतों के पास हुकूक थे वो हम टाइम वापस लाना चाह रहे हैं, what then is your problem with an Aurat March as opposed to like a Haya March? That's all I wanted to say. Like if I may, I think the problem with Haya March is not that women are marching. The problem is men are speaking and they use women as tokens कि ये देखें औरतें आई हुई हैं और सारे जो स्पीकर्स होते हैं वो मर्द होते हैं. इस साल कुछ औरतें हुई हैं बट पहली Haya March में सारे स्पीकर मरते हैं. like ये देखें ये इतनी सारी औरतें आई हैं हमें सपोर्ट करने. Yeah. Yeah, so for sure, like I think जो Haya March की जो optics है obviously questionable है. Do I like the fact that women are getting out? Obviously, I love the fact whenever women get out, it's great. Are you saying the right things? No, but I'm not hating on Haya March because I'm a misogynist or I have something against these women. I'm not hating on them at all. I'm saying that ideologically एक difference आ जाता है. So again, I feel like a lot of this also falls on the way the audience or the general public perceives these things, right? कि अगर कोई औरत मार्च का organizer criticize कर रहा है Haya March को या किसी भी और चीज को, तो it is automatically taken as अच्छा ये तो feminism की बात करती हैं लेकिन ये तो खुद औरतों के against के खिलाफ बोल रही हैं. I think the idea is to understand कि we are able to see that they are women and we are still able to critique what they are doing, which is also the case. I feel कि औरत मार्च की बहुत दफा ये हुआ है ट्विटर पे भी. I feel threads आई हैं people who have attended औरत मार्च saying this is what I thought was not right, and I think that's great. Like how else can a platform or can a movement grow and become better? And I feel like every year it has been better if there is no critique. Just for instance, this year I think Laiba mentioned that there was a far more inclusion of Khwaja Siraz, and I think that was lovely. कराची में जो मुझे बहुत खुशी हुई थी देखे वो ये थी कि कराची में there were people from the disabled community. They were being wheeled in on wheelchairs and I thought it was lovely. It was great seeing them there. उनके लिए जगह थी, सब कुछ था. There was a sign language translator as well on stage and I thought that was incredible. So there are so many things that keep getting better year by year. But if you, as somebody who probably does not attend the marches, knows nothing about the manifesto and only gets their information from like a YouTuber who is like ये तो अबे हाय फलानी, then just थोड़ी मेहनत कर लो. Google पे अब उस एक YouTuber के अलावा जो actual चीजें आ रही हैं कुछ और नहीं आता, औरत मार्च के पेज पे चले जाओ, बस थोड़ी मेहनत कर लो. That's all we ask. That's it. Ekta, you've been wanting to say something for a while, but आप गायब हो गई हैं. Yes, sir. I will add. Yeah, I actually think that. Were you taking notes when Sajeer was talking? No, I was outing my cigarette and then मैंने अब ये बातें करनी है सारी. नहीं, I actually think that the optics of Haya March and the language that they kind of use is fucking great. Like the fact that like, okay, so I have this understanding that like secularism is not working for Pakistan, and this is like just seeing how things pan out and how, and I don't know how to put this. I don't know if it's necessarily right or wrong, and I'm up for like discourse on this, but like I think secularism just doesn't work for a place like Pakistan, especially because the founding principles of the country itself, like the Islamic State, well, wo naam baad mein aaya tha, but like the founding principles itself are religious, right? So I think the inclusion of religion within the march is a very like smart move, just because it like enables so much more conversation than just coming up and sort of making it seem like it's sort of not successfully defending the whole it's from the West wala title. So I feel like if we were to, jaise agar hum baat karte hain, like feminist interpretations of the Quran ki agar hum baat karte hain, like I feel like those are awesome moves, just because like for a place like Pakistan, the only thing that will work is including religion in the discourse. So I guess I was wondering, like, can Aurat March be inclusive off of that, like be and sort of advertise that they're inclusive off of that as well, just so it could possibly garner more class
equitable participation in the march. And then in terms of, sorry, I'll come to that. In terms of like criticism towards Aurat March, I do think that like it has, just as Sajeer keh rahi hai, like it's receptive towards criticism, and it has like largely like from the first time, and I guess it makes sense. Like jab like the first wave of feminism mein log likh rahe the feminism ke bare mein, it was kind of like whatever, and then like other people came and they critiqued it, and then we came up with this intersectional framework and all of that. So criticism is what's necessary. And I completely agree with Sajeer that criticism has to come from a place of knowledge and not necessarily from a place of Ducky Bhai telling you what Aurat March is, or some like shitty ass YouTuber giving their definition of how it's problematic. But yeah, I want to hear everyone's opinion about what they think about like sort of adopting like a framework that is quasi like religious, just to sort of make the movement seem more and I'm not saying this so it's more digestible, I'm saying it so it's more like औरतें तो और है ना, मतलब औरतें जिनका फंडामेंटल वो है, उनको तो like एक तरह से, और अगर religion is the tool that can be used, then why can't we use it in a certain way? We did a very detailed podcast with Nigat Saeed Khan on this topic, and I know Mariam Amir ki to is pe PhD है, so she wants to address it. But Ekta, I want you to clarify, ताकि discussion थोड़ा specific हो. When you say you want them to be more inclusive of people who are religious, is the premise that they're not inclusive right now? Because I feel like they're very inclusive. The thing that we're not factoring in is the fact that there is state-sponsored propaganda against them, which likes to label them as being blasphemous, which uses the state's resources. तो ये भी उन पे पिन करना कि आप इस प्रोपेगेंडा से भी लड़ें, फिर अपने in what way do you feel they're not inclusive of religious people? No, I don't think they're not inclusive. I just think that like if there is propaganda that is being sort of used against the movement itself by labeling them as blasphemous, ya jo bhi, like there has to be, and I guess this is an underdeveloped thought also, but there has to be like some form of like combating that, just because like in my perceptibility of Aurat March, like it and I guess I attended it 2 years ago, so I wouldn't necessarily know exactly, but like it does sort of sometimes give off this vibe of like, but do they, or does the propaganda like, label them as such? Is it the Aurat March, or is it the propaganda which creates this perception? No, it's definitely the propaganda, but there has to be some form of like making the movement more. And I understand that like why is the onus on the people running the space to like propaganda लोग हैं यार, दूसरी तरफ स्टेट है. क्या है? बेचारे 12-13 लोग हैं, दूसरी तरफ स्टेट है. I mean कितना करें वो लोग? No, that makes sense. We're hogging the discussion. Other people. Also, sorry, Maya, I'm gonna let you speak. Just one quick point. I also feel like whenever I've attended the march, I've never felt that it's un-Islamic or non-religious. Like being at the space, when you hear the people talk about the things they're talking about, they're coming from I would argue, a space which is upholding the very rights of all religions, I would argue, in fact, because aapka jab mazhab in general, what does it talk about? It talks about equality, it talks about compassion, it talks about all these things, and I feel like all those conversations on a very cellular level are being had at the march. A, B, and please, Maria, correct me if I'm wrong here, but I feel like if tomorrow, let's say, Aurat March decided to take a religious route, I feel like with the propaganda that is at play always, I feel like that could possibly be a far more dangerous move, because then that gives fodder to the discussion that these people are taking a particular religion and then perpetuating X, Y, Z, whatever. Because again, when it comes to control over what is said during the march, there is very little control, right? Because participants are there, वो गुस्से में है, वो से आए हैं, वो अपने आप को express करना चाह रहे हैं, and that becomes a very sort of dangerous territory, I feel. But yeah, I'm going to let Maria and Mariam and Zoya take
Okay, so lots of stuff, but I think that I wanted to respond to the last question first. We recently on Twitter, Tazeen Anjum did a space where we invited four PhD Islamic feminist scholars. And we were talking about Muslim feminism because we wanted to kind of debunk all of the nonsense that is sort of posited under the framework of an Islamic framework to counteract feminist values and the Aurat marches. And they answered questions about, women's mobility, about rights, about inheritance, you name it, through, a Muslim feminist lens. और उसमें फिर प्रॉब्लम जो उसका रिस्पॉन्स और रिएक्शन आया था वो ये था कि अब ये हमें इस्लाम समझाएंगी, ये औरत मार्च वाली. And so my problem with, I understand your point, because if you look at it purely in terms of a numbers game, then obviously, yes, you need to negotiate and deal with a religious narrative for any politics in Pakistan. But अगर हम accept करते हैं कि progressive politics आपने करनी अपने मुल्क में, वो left की हो, जौन सी भी हो, progressive politics हो, the problem is the moment you accept this idea that you have to cater to, a certain group's narrative in order to do that, you are acknowledging that what you're currently doing is not Islamic or is against Islam. You are giving some kind of weight to their argument that हम अभी जो कर रहे हैं वो इस्लामिक नहीं है या वो इस्लामिक एंड वो कॉन्ट्ररी है, तो जब हम आपकी तरह बात करेंगे तब हम इस्लामिक हो जाएंगे, which in itself I think really restricts our territory because it means in some way endorsing a lot of the crap that is done in Pakistan in the name of religion. वो honor killings हो, वो minorities की persecution हो, a lot of the nonsense that we do with using a religious cover, that I think if we're using progressive politics to say, no, your religion doesn't allow you to do this, you are misappropriating religion, you are like everything you're doing, this isn't religious cover. So if we have that politics, and I feel that we must, if we are going to speak for the rights of minority communities and gender minorities, and if we're going to speak towards a more inclusive just environment, so the idea that we bring religion into it, I completely am for 1,000% the idea of using examples of religious figures in progressive politics and saying, using Hazrat Aisha's example, for mobility, or Hazrat Khadija's example for a woman owning her business or agents, like that. I think that's wonderful to do because yes, that has currency and social currency in Pakistan. But I think the idea of taking our cue and our onus from the religious right would be a disaster, because then we are giving weight to their assessment कि कोई भी प्रोग्रेसिव काम जो पाकिस्तान में होता है वो वेस्टर्न एजेंडा होता है, वो एंटी इस्लाम होता है, वो उनका जितना नैरेटिव है फिर हम उसे वजन दे रहे हैं. And I think our politics should be that no, everything we're asking for is not anti-Islam. There is an entire progressive Islamic history which you guys love to talk about when you want to talk about science and you want to say कि मुसलमानों ने इजाद की थी, then you love bringing that up. But anytime that same narrative leads to emancipation, then it becomes Western. So I think like the idea कि because if you're going to play that game, because it's already embedded in a certain power, right? You have a mullah military nexus that runs the country. If you play on that field, you can never be progressive in anything. Not just gender, I think in anything, because you've already given complete reign there. I think our need needs to be to convince women of across classes that आपकी indigenous history में भी progressive policy, revolutionary women's policies or politics है. आपकी औरतों ने जंगें भी लड़ी हुई हैं, not that that's the best example, but लड़ी हुई हैं. Mobility वाले example के हवाले से आप वो दे सकते हो. आपकी औरतों ने courts run की हुई हैं. आप मतलब you can look to an indigenous politics of the land. And what I just wanted to, sorry, I'm taking too much time. One of the things that I think Zoya was mentioning earlier, and that you brought up about how effective the policies of
the approach is working for Aurat March. And something that I think is really interesting, that a shift that I've noticed in the last 2 years, एक कि मुझे स्पेसेस में बहुत लोगों से ये सुनना पड़ता है कि ये औरतें लैंड की भी बातें कर रही हैं, ये फलां की भी बातें कर रही, इसका फेमिनिज्म से क्या ताल्लुक है? So the idea that for men it's such a problem to understand that any woman can be, any issue can be a feminist issue. Land is a feminist issue. Politics, economics is a feminist issue. Anything can be claimed and looked at from a feminist lens is very disturbing, because they want us to, you'll even see it on media. They'll say, ख्वातीन के issues पे बात करें. As if हर चीज ख्वातीन का इशू नहीं होता. ख्वातीन के इश्यूज बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जिनसी तशद्दुद से रिलेटेड होते हैं, ऑनर क्राइम्स और वायलेंस से रिलेटेड होते हैं. And that's absolutely a woman's issue because it happens to women more, but so is everything else. And so I think the moment you have like a very intersectional, inclusive manifesto the way you have now, you have groups that you didn't expect to be feminist allies, ethnic minorities, other groups that are marginalized on those same bases from economic perspectives, kachi abadiyan, those groups will suddenly say, okay, we didn't know this was a feminist message. But if it is, that's our message. So in that way, you can get newer allies, but you will lose the women who only wanted like the publicity opportunity part of feminism, कि आप सिर्फ वो 3 points पे बात करोगे, क्योंकि अब feminist politics हो गई है change. It is, everything is feminist politics if you are a feminist. So I think chat में लोग और inclusive होना चाह रहे हैं. Sorry, but a bunch of people are saying the same thing, which is Zainab confronting Yasin, include that too. Lady Zainab Sarman, Lady Fatma Sarman. Mariam ने बहुत टाइम से कुछ बोलना है और मरियम को गुस्सा आता जा रहा है और वो गुस्सा निकालने वाली है. So मरियम, गुस्सा निकाल. Mariam is living a DDLJ fantasy in a train in Europe. कोई इसको तो नहीं रोकने आया स्टेशन पर. चले मरियम को. एक तो इस पर गुस्सा आता जा रहा है कि मुझे इतनी देर से बोलने नहीं दिया गया, और दूसरा मैंने एक आप नेक परवीन के गेटअप में क्यों आएंगे आज? क्योंकि मैं ट्रेन में बैठी हूँ. तो एकता की बात से मैंने शुरू करना था कि एकता ने कहा था कि हम फेमिनिस्ट का वर्ड पता नहीं शायद फ्यूचर अगर हम ना इस्तेमाल करें और मोर इंक्लूसिव और मोर एक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी, तो ये मत भूलें कि औरत मार्च की रंडियां जो है वो एक उर्दू अखबार ने निकाला था. ठीक है, हमने तो फेमिनिस्ट और औरत मार्च बोला था, लेकिन उन्होंने उसको आगे ट्रांसलेट किया औरत मार्च की रंडियों में और फिर आगे मजीद. और दूसरा ये जहाँ ये रिलीजन और इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, मुझे नहीं हया मार्च के मैं अगेंस्ट हूँ और मैं उसके क्रिटिसाइज करूँगी, और मैं नहीं समझती कि नहीं, जाहिर है मैं उनको डंडों से तो नहीं मारूंगी जिस तरह वो हमें औरत मार्च को थ्रेट देती है कि हमें डंडों से मारेंगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के जिस दिन ये अल-हुदा वाली और ये सारा जो है ये वो वाला हल्का सा भी फेमिनिस्ट नैरेटिव लेके आएंगी ना, हल्का सा भी, जिसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात होगी कि औरत के हुकूक, तो यही जो इस्लामिक सर्कल्स हैं जो चुप करके, या ओवरऑल मुआशरा जो चुप करके इनको बर्दाश्त करता है, उसी वक्त दे विल फ्लिप एंड दे विल फ्लिप वेरी बैडली. अगर आप लोगों को याद हो, हमारे कोई बचपन की को खबर है कि एक आई डोंट नो यूके में एक खातून थी जिसने इमामत करने की कोशिश की थी, तो या उस पे याद है बैकलैश, और मुझे याद है पेरेंट्स साथ बैठ के कहते थे कि व्हाट रिडिकुलसनेस और व्हाट बुलशिट ये यहाँ पे चल रही है. तो मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि रिलीजन जो है, इधर आप इस खुशफहमी में ना रहें कि इस्लामिक फेमिनिज्म, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक तरह का इस्लाम चलता है और वो है सुन्नी बरेलवी इस्लाम. उसके अलावा यहाँ पे कोई इस्लाम नहीं चलता, उसकी लाखों एग्जाम्पल्स मौजूद है. तो मैं इस्लामिक फेमिनिज्म या इस्लामिक प्रो वुमेन वॉट एवर यू कॉल इट मूवमेंट को उस दिन मानूंगी जिस दिन औरत को तो छोड़ दो, गांधी जैसे लोग जो है ना वो सुकून से पाकिस्तान में रह के कुछ बोल सकते होंगे. सेकंड, इसकी बड़ी मजेदार एग्जांपल है ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद, यही नाम है ना उसका. उसको मैंने उसको बड़े शौक से उसकी तालियां बजाई, बल्कि हम लोगों ने जब वो ब्लास्फेमी के चक्कर में उसने कुछ बयान दिया, हमने कहा वाओ वाओ
finally another Gandhi type, some person is like giving an alternative opinion. लेकिन मुझे उसी वक्त इतनी को खैर शॉक तो नहीं हुआ, लेकिन डिसअपॉइंटिंग हुआ कि उसके जो औरतों के हकूक के ऊपर जो उसकी पॉडकास्ट है, सॉरी जो उसकी टॉक्स हैं, उसके अंदर इवन मुझे हंसी आई कि वो बात करते करते वो ये कहता है कि बल्कि औरतों को चाहिए कि दूसरी औरतों से भी पर्दा करें. आई वॉज लाइक वाओ, ये मतलब, तो उसी वक्त मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा भाई बहुत हो गया. और जहाँ तक ये उनकी बात है, ये जमीयत वाली लड़कियों की लेट से बात है, तो मैंने उनको अपफ्रंट देखा है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, और मुझे पता है कि उनकी थॉट प्रोसेसिंग क्या होती है. उनको पीछे से कंट्रोल का, आप ये मत भूले कि ये जमीयत और ये लाल मस्जिद वाली खवातीन को पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है. पीछे से वो मुल्ला ही कंट्रोल कर रहा है, वही उनको अलाउ कर रहा है, वही उनको पावर दे रहा है, वही उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं. अगर इन जमीयत वालियों को मतलब इन सम अल्टरनेटिव वर्ल्ड, औरत मार्च वाली कहती है ना कि तो अच्छा तुम लोग डंडे लेके आओगे तो हम भी आज डंडे लेके आएंगे. तो क्या नाम है, ये जमीयत वालियों को सबसे पहले प्रोटेक्ट करने वाले यही मौलवी भी आएंगे वहां पे, वही डंडे लेके हमें मारने के लिए. ये मत आप भूलें. सो calling them like in on some level saying that they are like some version of be empowered women, it's a delusion. ये delusion है मेरे नजदीक, और मैं इसको किसी भी पॉजिटिव एंगल में नहीं देखती. ये सिर्फ कंटिन्यूएशन है फरहत हाशमी की, और ये बात भी वही करती. हाँ, I know Qurrat has joined us, but ये discussion क्योंकि Zoya needs to talk about this, let's get Zoya's answer, then फिर Qurrat को welcome करेंगे. Yeah, I'm going to try to be as quick as possible about this. Hi, Qurrat, number one. Number two, so I'm a lot more ambivalent about this, to be honest. मतलब a lot of what Maria said did resonate with me. But एक तो मुझे ये secularism versus Islam वाली जो debate है, I think I'm personally not interested in that so much. और इस पे बहुत सी जो हमारी like older feminists हैं, especially WAF में बहुत इस पे बातचीत हुई है. I think WAF also kind of went through this quandary in the 80s पे शायद factions बन गए थे, and we keep being told कि भाई ये मतलब we've already like don't go there type, you know, as far as that debate is concerned, like हम लोगों ने ये गलती की है, and वही जो मारिया ने जो reason state की है उसकी वजह से didn't work out, and ये एक sort of एक I guess like एक cautionary tale के तौर पे बहुत सी like हमारी generation की feminists से सुनती हैं. मैं इस तरह से ambivalent हूँ कि I am not somebody who wears secularism like on my sleeve. Like I'm obviously like I'm skeptical about like, you know, like the state and religion merging, and I want that separation personally, at least I very much do. But at the same time, I feel as somebody obviously who works on ground and speaks to people, and I think it's very naive to assume कि, you know, like religion कभी भी बीच में conversations में नहीं आएगा, because if you speak to working class people in Pakistan, I mean, obviously, मैं ये नहीं कह रही कि I speak on behalf of all working class people. I've worked in particular communities. I've spoken to particular people, and this includes minorities as well. But I feel that religion comes up. I think that people, obviously, because Pakistan में इतनी गुर्बत है, इतना नंग है, इतनी, you know, like इतनी बस परेशानी का आलम फैला हुआ है कि like religion is, you know, like it provides comfort to a lot of people. And I mean, as somebody who grew up in a very religious household, who obviously has a lot of very religious friends, मतलब मेरे से ज़्यादा, I, you know, like I'm also perhaps personally empathetic in the sense that I do, you know, respect people's obviously like sort of personal relationship with religion and how that informs their feminism. So I know like मेरे इर्द गिर्द like even, you know, like जहाँ मैं मतलब जिन feminists के साथ मेरा उठना बैठना है, obviously बहुत sort of mixed views हैं, but I kind of feel bad for a lot of people and minorities in particular जो देखते हैं कि एक यही जो मरियम बात करी थी, एक narrative, वो एक सुन्नी वहाबी narrative है जो बस constantly हमारे ऊपर थोपा जाता है, and you know, like they basically like their voices are subsumed as well. Why can't they talk about like sort of, I guess, like even, you know, I mean, progressive elements in their religion, for instance, like a lot of Shia friends of mine, you know, I bring this up कि भाई मतलब हमें तो लगता है कि बिल्कुल we've been robbed of our history. This is such an erasure. And I mean, I'm not, you know, I'm no one to speak on like how problematic or how great like, you know, sort of Islamic feminism is, and like मैं again, because I don't engage with that personally,
cannot obviously like मैं उसकी हिमायत नहीं कर सकती, but at the same time मुझे थोड़ा तरस भी आता है लोगों पे कि यार मतलब ये क्यों, you know, like why is this such a pick and choose situation for people who are also sort of battling with their personal religious identity a lot more than perhaps I am. So I don't know, like my answer is very sort of on the fence about this, but I think again because our movement is a lot more diverse now, even in terms of like accepting diverse perspectives. I think that tension perhaps is a good thing. It's okay. Maybe अगर हम movement के तौर पे ना obviously मतलब ascribe करें to, you know, like saying कि मतलब we are going to like basically play the same game, because I do understand that it becomes very tactical and obviously like playing any game, मतलब we're not politicians, we're feminists at the end of the day. मतलब मुझे कोई सियासतदान बनने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है, बहुत गंद है इस सब में. So I think it's fine again to have that sort of, I guess, sort of. Mostly discussion semantics में चला गया, because I also feel like sometimes Aurat March has a target on its back regardless. वो एक religious side से भी गालियां खा रही हैं और फिर एक ultra woke तबका है who just picks a nitty gritty out and says ये जब तक नहीं करेंगी तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे. तो सब अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए भी, सॉरी आई एम कटिंग यू, मूवमेंट के अंदर भी ये सवालात उठते रहते हैं इसके बारे में, एंड ऑब्वियसली लाइक ये एक सॉर्ट ऑफ आई गेस पॉइंट ऑफ कंटेंशन है अमंग फेमिनिस्ट्स, बट आई थिंक इट्स ओके अगेन लाइक आई सेड फॉर दैट टेंशन टू जस्ट बी देयर perhaps. I think criticism is great within the movement. These discussions are essential. But when something just becomes a stick to beat a movement with on social media, तो वो एक disingenuous भी feel आती है कि I mean, you know, even from certain other marginalized communities, and it's fine if they felt excluded. Their feelings are 100% valid, and the movement needs to do more to feel them included. But cancel उसको कर दें based on कि नहीं मेरी identity इनसे थोड़ी अलग है, which is fine, it's your identity. But एक तरफ अगर उनको blasphemy allegations आ रहे हैं ये इतनी nitty gritty वो culture में cancel culture में जाकर, I'm not a fan of that. I'm much more fan of कि सारी हम साथ आकर अगर बेहतर करें चीज तो वो बेहतर होगी. जी मरियम. मैं सिर्फ ये कह रही थी कि फेमिनिस्ट सर्कल्स में सुना है ऑनलाइन कुछ लोग कहते हुए कि वो तो फलानी तो इस्लामिक फेमिनिस्ट है, तो देयर इज नो सच थिंग एज इस्लामिक फेमिनिज्म, या अगर आप इस्लाम की तरफ कर लें तो वो जो करंट मेल मुल्ला नैरेटिव है उसके अंदर भी अगर आप उसको डिग इन करना शुरू कर दे तो कोई नैरेटिव नहीं है, तो मतलब कोई खास सर पैर नहीं उसका बनता. तो मैंने इन माय पर्सनल जर्नी मैं अगर ये कहूँ कि मेरी जर्नी फ्रॉम लेट्स से एथिज्म टू नाउ सूफी ह्यूमनिस्टिक इस्लाम, तो मैं तो ये बात नहीं कर सकती, मुझे तो फिर भी जूते पड़ेंगे. हालांकि एज अपोज टू वो कौन है वो जो अभी गांधी के विंग्स के अंदर अभी आया है एक्टर, वो क्या नाम है उसका, वो बड़े आराम से नहीं हाँ हमजाली बाची, वो बड़े आराम से अपनी जर्नी जो है वो फ्रॉम एथिज्म टू इस्लाम का जिक्र कर सकता है. तो मैं अपनी जर्नी अगर बोलना शुरू कर दूं कि मैं तो इसलिए एथियस्ट हुई थी क्योंकि मैंने जब पढ़ा कि औरत के ये हकूक है तो मुझे तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम के ऊपर इवॉल्व हो रही है उसमें मुझे ये लगता है कि ये खाली मर्द मौलवी क्यों आके हमें कुरान का मतलब बताएंगे, वो इस्लाम उतना मेरा भी है जितना इन लोगों का है, इंसानों के लिए. तो अगर मेरे लिए इनके लिए आसानी है तो मेरे लिए भी आसानी होनी चाहिए. दिस इज हाउ आई सी इट. I don't like to explain my belief system. I don't think I even need to, but I mean this is how I look at it. And what Shehzad said के this cancel culture के वही जो हमारी even feminist क्या बल्कि मैं atheist circles के अंदर भी वो ना अच्छी खासा religion based बन गया कि वो अगर आप टिकट नहीं ली ना मरियम तुमने, कंडक्टर आ गया है. मुझे किसी अंकल ने चुप कराया, क्यों? मैं तो नहीं चुप हो रही, सॉरी. तो मरियम ट्रेन से निकाली जाने वाली है. ऐसी की तैसी मेरी तरफ से एल खाएं, ट्रेन से निकाले जाने वाली.
If I could add something here. Can we welcome Qurrat first? Sorry, Sajeer. Yes. Sorry. Qurrat Mirza, Aurat March Karachi is in the house. Whoa. Now, Sajeer, you can add. No, I think you should let Qurrat speak. Okay. Mariam ट्रेन से निकाली जा चुकी है जी Qurrat. अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता. इससे पहले जो बात हो रही थी वो बड़ी खतरनाक बातें हो रही थी. एंड आई होप कि आप सब लोग पब्लिक हैं, तो मैं चाहूंगी दूसरे साथियों को सुनना. और थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रॉम कराची. और सब बात करें तो फिर मुझे कुछ समझ में आएगा, तो आई विल स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट. I think initially I think it started with like Ekta asking a question about involving religion and stuff in Aurat March, but I actually have a very different outlook on this, just to sort of take the conversation a little forward. When we talk about Pakistan as in terms of being the a certain of like in the context of a certain religion, I think it's also important to remember that ideologically Pakistan is not just the land of Islam. You know, like ideologically Pakistan के झंडे में एक white भी है, और उस white को politics में भी part play करना है, उस white को आपकी movements में भी part play करना है, और एक common ground जो है, अगर आप religion की बात कर रहे हो और आप बोलते हो कि you throw around terms like Islamic feminism, Islamic movements, ये वो वगैरह, I think it's very important to, if you are going to make the argument when it comes to religion, then also include the white in the flag, right? Because if you are just making a particular argument, then you are just arguing for the sake of arguing because you want a particular status quo to keep being instilled as it has been for the longest time. But if you bring religion into politics, then pay attention to the white in the flag, or don't talk about it at all. Because clearly, if you are only invested in one side of the coin, then you are making an active effort to religiously exclude a bunch of every other faction, essentially. दूसरी बात ये है कि I think again I'm going to borrow from what Moise said recently. They spoke about creating our own idea of morality. राइट, क्योंकि हम जब राइट से जब बात राइट की तरफ से एक मॉरल कंपस आया हुआ है, राइट, कि ये मोरालिटी है, ये स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी है जिसके ऊपर औरत मार्च फेल्स टू कंप्लाई और फेमिनिस्ट फेल टू कंप्लाई. Why does that moral compass, and I'm not saying the onus is on Aurat March, I'm saying this is an individualistic onus, why does that moral compass keep coming from the right? What if we created our own morality? What if we define what is moral and what is not moral? What if we lay a framework for morality के हमारी morality ज़्यादा inclusive भी है, हमारी morality में आपकी आवाज़ भी आए, you are allowed to amplify your voice, you are allowed to talk about certain things. Our morality is all encompassing. So I feel like this is something also that थोड़ा religion की arguments थोड़ा different है, but the idea of creating a new normal for morality, I suppose. Anybody can jump in. Okay, nobody wants. अगर heavy बातें नहीं करनी तो तुरंत हमने बड़ी खुशी हुई आपको टप्पे गाते हुए देखकर. कितनी खुशी हो रही है इस साल औरत मार्च कराची. थोड़ी हम खुशी की बातों में एंड कर ले. It's also a huge achievement what Aurat March has accomplished. थोड़ा हम खुश होके joyous इस फेमिनिस्ट बैठक को बनाकर एंड करें. जी कुरत, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? भाई बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा. और इस साल जो है हमने पूरा रिक्लेम किया कायद के मज़ार को, और हमने पूरे जो जिना की 11 अगस्त की जो स्पीच है जिसका जिक्र अभी कर रही थी कि जो हम अक्सर अपने झंडे में सफ़ेद चांद तारा भूल जाते हैं, तो बेसिकली आज की जो औरत मार्च मज़ार कायद के ऑपोजिट करना और एम ए जिना रोड जैसी जगह पर जो आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कुछ है, उस सारी जगह पे जाके फेमिनिस्ट नारे लगाना और feminist narrative रखना itself is an achievement का लफ्ज़ है. So वही बात है कि जब आप रिलीजन और स्टेट की बात करते हैं तो I also believe कि ये दोनों चीज़ें सेपरेट ही होनी चाहिए, बिकॉज
इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ किसी एक मजहब से रहने वाले लोग नहीं हैं। ये मुल्क जो है वो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उसमें रहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनके राइट्स हैं वो तमाम के इक्वल हैं। तो जब आप एक ही मजहब की बात करते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर ही रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम ह्यूमन राइट्स के नैरेटिव को रखते रहेंगे, हम ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क में बात करते रहेंगे, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। इंसान चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो तमाम इंसान की यूनिवर्सल हैं, और हम इसी सोच को, इसी आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए चलते हैं। जहां तक बात हुई थी वुमेन्स एक्शन फोरम की भी बात हुई थी, तो ये इट्स अ लेसन लर्न कि एंगेजमेंट जो है ना मुख्तलिफ इंतहाई ऑपोजिट आइडियोलॉजिकल जो नजरियाती लोग होते हैं उनसे रखना एंगेजमेंट किसी जमाने में हो सकती थी, बट नाउ इट इज डेंजरस, बिकॉज यहाँ पे इस माशरे में, समाज में डायलॉग जो है ना वो अपने ही नजरिए के लोगों से करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप उन लोगों की बात करें जो नजरियाती तौर पे बहुत मुख्तलिफ हैं आपसे, और जहां पर आपके नजरिए के इख्तलाफ के तौर पे आपको मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात और खिताबात से नवाजा जाता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा आपकी जान से वाबस्ता है, आपकी सेफ्टी से वाबस्ता है। तो ऐसे समाज में जहाँ पे बात करना इज नॉट नॉर्मल, वहां पे ऐसे लोगों के साथ एंगेजमेंट जो बिल्कुल ही आइडियोलॉजिकली आपसे मुख्तलिफ नजरियात रखते हों, वो एंगेजमेंट तो हमें भी नहीं समझ में आती कि हम किस तरह करेंगे। लेकिन एक बात है, अगर आप मैं जिसको इस बात को इस तरह देखती हूँ कि एक एंगेजमेंट होती है और एक ये आप अपना नैरेटिव किस तरह बिल्ड करते हैं सोसाइटी में। तो मेरे ख्याल में औरत मार्च का आज 5वां साल था, और ये नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जो सड़कें हैं, वो औरतों की जगह भी हैं। तो अगर आप विरासत का नारा लगा कर आ रहे हैं तो भी आप औरत को सड़क पे लेकर आ रहे हैं, चाहे वो बुरके में है, चाहे वो चादर में है। तो वो जो एक चीज है, चाहे कोई इसको माने या ना माने, इट इज बिकॉज ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान, और खास तौर पे जो एक पब्लिक स्पेसेस की जहां तक बात है और जहां औरत मार्च का जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें बहुत हद तक जितने भी नजरियात से लोग ताल्लुक रखते हैं उनको कम से कम ये तो बात बावर करा दी गई है कि औरत भी इस मुल्क में एक एंटिटी है जिसकी बात होगी और डंके की चोट पर हो। तो जब भी आप देखें कि जो मुखालिफीन हैं या जो मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, वो भी अगर आप बात करते हैं तो पोलिटिकली खवातीन को आगे रख के बात करते हैं। और अब जो औरत मार्च पे एतराजात होते हैं वो चूंकि चुनाचे ये वो अगर मगर हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर आके तान टूट जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जा रही है लोगों पे कि जो औरत है और मुख्तलिफ असनाफ के लोग हैं और ख्वाजा सरा है, वो इस मुल्क की 50% से ज्यादा इकाई है। और अगर 5 साल से एक ऐसी मूवमेंट जिसको हर साल किसी ना किसी प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जाता है, उससे पहले भी उसके बाद भी इंडिविजुअली लोगों को टारगेट किया जाता है, मूवमेंट को टारगेट किया जाता है, कभी फंडिंग का इल्जाम, कभी ब्ला 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 ब्ला। अगर आप ये देखें वो तमाम प्रोपेगेंडाज अब उसमें कोई जान नहीं देते। और ये वजह है कि आज कराची में औरत मार्च एम ए जिन्ना रोड पर, जहां पर एम ए जिन्ना रोड कुछ ही चीजों के लिए मशहूर है और वो सारी चीजें हम सबको पता है, वहां पर अगर आजादी का नारा लगा है, इट इज अ सक्सेस, इट इज समथिंग वी शुड ऑल सेलिब्रेट, और वही हम कर रहे हैं। और जिस बात से सब लोग डरते हैं, जो हमें लगता है कि ये तमाम बातें अगर क्लोज रूम्स में हो, बाउंड्रीज के अंदर हो, एक दूसरे के कान में हम करें और बड़ी थ्योरेटिकल डिस्कशंस हो, किसी को इससे परवाह नहीं होती। द इशू इज कि women are coming out, reclaiming their spaces, और डर और जिसे कहते हैं ना, तो किसी खौफ के जोर से आजादी का नारा सड़कों पे लगा रहे हैं और लोग सुनने पे मजबूर हैं, क्योंकि वी आर इन नंबर्स, वी आर इन पावर। सो आई थिंक ये जो एक चीज है जो इस मुल्क में जो ना सिर्फ फेमिनिस्ट तहरीकें बल्कि जो हुकूक की तहरीकें हैं, जो इंसानी हुकूक की तहरीकें, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, और एक दिन जरूर आएगा, शहरों में क्या गाँव में भी हर जगह ये बात होगी, और हम अपना नैरेटिव इसी तरह फैलाएंगे।
जो मुखालिफिन है अगर वो हैशटैग लगा के ही चंद चार बातें और करते हैं तो वो भी हमारे ही बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक डायलॉग शुरू हो गया है और अब तो डायलॉग से बात आगे बढ़े। तो कुछ भी कर लें, 100 बातों की एक ही बात होके रहेगा औरत मार्च। 5वां हो गया है, 6ठा भी होगा और बढ़ती जाएगी मूवमेंट, चलती जाएगी दुजुदा है। मार्च तो होगा। वी आर अप्रोचिंग 2.5 घंटे और चैट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंसर कल्चर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे डिस्कशन शुरू हो गया है, व्हिच आई फील इज अ लॉन्गर डिस्कशन। सो मे बी इन मार्च वी कैन, इफ पीपल हैव टाइम, वी कैन डू दिस एवरी वीक मंडे नाइट, ताकि लंबी लंबी डिस्कशंस हो। कैन वी गेट क्लोजिंग स्टेटमेंट्स, बिकॉज मेरी एलर्जीज बहुत ज्यादा किक इन कर रही है और मैं मरने वाला हूँ। सो लेट्स गेट क्लोजिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम एवरीबॉडी, whoever wants to. I think I want to hear Mariam talk first because I feel like she hasn't talked. मरियम को जर्मन लोगों ने चुप करा दिया और बोला कि ये ब्राउन गर्ल को तमीज नहीं है, ट्रेन पे इतनी जोर जोर से बातें कर रही है। जी मरियम तो गो। मुझे समझ ही नहीं आई हुआ क्या। मैंने उसे पीछे मुड़ के पूछा है कि तुमने मेरे से कुछ खाया, उसने कहा नहीं। मैंने कहा पता नहीं, फिर कुछ और किसी को फट गई उसकी, फट गई। हाँ मैंने उसकी फाड़ी है। यार मैंने सिर्फ ये कहना है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड कैंसल कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट, 100 बातों की कोई खुरत की बात। एक बात के मेरा ख्याल है कि स्पेस जो है वो इनको नहीं देनी चाहिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। ढिठाई का एक लेवल जो है, जिसको अंग्रेजी और एकेडमिक वर्ड में रेजिलियंस कहते हैं, वो अब बिल्ड करने की ज़रूरत है। आई थिंक एवोल्यूशन में जो है वो नेक्स्ट स्टेप यही है कि ढिठाई का लेवल बिल्ड कर लो। और मेरा ख्याल है बहुत सारी खवातीन तो शुरू एंट्री मारते ही ढीठ थी। और तीसरी क्लोजिंग बात मैं ये कहूँगी कि उसके अलावा जो वर्डिंग्स के ऊपर जो हर दफ़ा एक डिस्कशन होती है ना, या नारों के ऊपर, वो मेरा ख्याल है कि होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस सिर्फ रोना धोना नहीं हो सकता, वो पिछले 50-60 सालों में हो गया है। हाय मुझे मार दिया, हाय मुझे कत्ल कर दिया, हाय मेरा रेप कर दिया। अब जो जिस ट्रोलिंग से बात शुरू हुई थी ना, उसी को हमें आगे इवॉल्व करने की ज़रूरत है। फेमिनिस्ट वर्ड हो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला वर्ड हो, कोई और तरह के नारे हो, वो उन सारों को स्पेस देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल के ज़ाहिर है जो ऑन ग्राउंड करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर ग्राउंड रियलिटी का पता होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि लैंग्वेज जो है उसको किसी भी तरह से उसकी पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। आई थिंक दिस इज द की टू सक्सेस। और नॉट आई डोंट नो हाउ आई विल डिफाइन सक्सेस, बट या ये ज़रूरत है। What I wanted to say, मैं आखिर में ये कहना चाह रही थी कि मुझे लगता है कि हमें we have to look at wins, because I feel that कभी कभार वो in all movements को हमेशा there's a lot of people who are always out there to point out what's wrong with it, what's the problem with it, उसमें खामियां क्या, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता, और वो तो होता रहेगा। और उसके साथ engage करना है नहीं करना, वो उस movement के लोगों कि मतलब दैट्स ऑन देम कि वो कितना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। लेकिन मूवमेंट को आपको हमेशा इन टर्म्स ऑफ विन्स देखना चाहिए और सक्सेस देखना चाहिए कि व्हाट डिड यू अचीव दैट वाजंट देयर बिफोर यू केम आउट ऑनटू द स्ट्रीट्स और बिफोर यू स्टार्टेड व्हाट यू वर डूइंग। और उस हवाले से आई थिंक औरत मार्च इज हिस्टोरिक। इट्स हिस्टोरिक बिकॉज एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। अच्छा बुरा वो तो आपको पता है। लाइक मैं हमेशा अपनी जो स्टूडेंट्स थी उन्हें ये कहा करती थी कि भाई जो गालियां देना है ना वो तो नई चीज नहीं है। यू एक्सपेक्ट दैट एनी वुमन हु स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ, जो थोड़ी सी भी बगावत करे अगेंस्ट, और मैं तो थोड़ी सी नहीं, मैं कहती हूँ जितनी हो सकती है बगावत करनी चाहिए, और जितनी ज्यादा औरतें इकट्ठी होके कर सके, वो आपको जरा बगावत में भी सेफ्टी मिल जाती है, नंबर्स थोड़ी सी वो होनी चाहिए। बट वो जब भी होगी तो गालियां देने वाले तो होंगे। मतलब दीज आर नॉट न्यू, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट जलील रहमान। व्हाट्स न्यू is how many women are coming out. What's new are the people who are joining you. वो नई चीज है।
तो पता है आई अंडरस्टैंड कि उस पे फोकस रखना बड़ा मुश्किल होता है when you're going through all of the trauma and the crap of actually having to deal with it. But in terms of what has this achieved, I think everything. I think the idea that women scare people in Pakistan is in and of itself. मतलब हम नाकिसे अकल भी हैं, हम बेवकूफ भी हैं, हम वीक भी हैं, वो तगड़े भी हैं, पावर भी उनके पास, किसी लेवल पे पावर उनके पास है, और येट हमारे नाम से, हमारी प्रेजेंस से, हमारे नारों से उन्हें इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि पूरा स्टेट मतलब को पसूड़ी पड़ी हुई है, आपके प्राइम मिनिस्टर को पसूड़ी पड़ी हुई है, सारे पागल हो गए हैं कि ये हम तो पता नहीं मतलब दुनिया खत्म कर रहे हैं, हम हमारा नेशनलिज्म भी खत्म हो जाएगा, हमारा मुताला खत्म, हमारा कल्चर खत्म, मतलब इतनी पावर अगर औरतों के पास होती तो हम क्या कर चुके होते अब तक. बट दैट टेल्स यू लाइक मैं हमेशा औरतों के सक्सेस को मिसोजिनी की एंजाइटी के साथ गेज करती हूँ. If we are making powerful men this damn scared and this damn anxious, something's working. We must be doing something right. And I want like that to be the message कि अगर इतने डरे हुए हैं ना, क्योंकि ये डराना और ये सब नई चीज नहीं है, this they do to everybody. But the fact that they're scared of us now, they're as scared of us as probably more than they are of India, because they talk about us almost as much as they talk about raw agents. वो हम अब raw agents भी बन गए. You know, the highest compliment of being any kind of dissenting voice in Pakistan is being called a raw agent and a CIA agent. We are all of them. We are every agent. So I think we have so much power, and so we should just be proud. अगला वहाँ पसूड़ी नो औरत मार्च की बहुत बड़ी अचीवमेंट है. They got ओरिया मकबूल जान to say dick pics on TV. बड़ी अचीवमेंट है यार. मतलब ओरिया मकबूल जान जैसा बंदा टीवी पे ये dick pics भेजने को मना कर रही है. जी Qurrat, Sajeer, let's get your final thoughts and then Zoya will end it. Okay. So because I was on the podcast last year and I ended with a poem, I'm going to do that. I wrote this for okay, it's in Urdu also. I tried something new, but ये आलमे गम ठीक नहीं, हक हमारा भीख नहीं, ये रुख नहीं बर्बादी का, ये नारा है आजादी का. And that's and I just want to quote the great Pooja Mishra, that when it comes to rights, we're asking for it, we're dying for it, get off our backs. Thank you. Qurrat, next year stage पे सजीर से पढ़वाइएगा. सजीर next year आ जाए organizing committee में. We need more women, more people like you. So मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि I totally agree with Zoya कि जितना वो डरेंगे वही हमारी समझे वही हमारी सक्सेस है. और वो कहते थे ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, तो पूरे पाकिस्तान में हजारों लाखों लड़कियां औरतें ख्वाजा सरा सड़कों पर हैं. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक निहत्ती लड़की और कहाँ हजारों औरतें. तो totally like agree with what Zoya has said कि मुझे बस ये लगता है कि ये लोग irrelevant हैं और जो इनको 2-4 मशहूरी मिलती है वो भी हमारी ही मूवमेंट की वजह से मिलती है. तो we are not scared and we don't care कि आप क्या कहते हैं, because we know that हम अपने constitutional rights डिमांड कर रहे हैं और हम रियासत से मुतालबा कर रहे हैं. जितने शहरी आप हैं उतने शहरी हम हैं. जितना तहफ़्फ़ुज़ आपको चाहिए उतना तहफ़्फ़ुज़ हमें चाहिए. जितनी आज़ादी आपको मिली है उससे ज्यादा आज़ादी हमें मिलने की जरूरत है, क्योंकि अगर मुल्क तरक्की करना चाहता है तो वो औरत जो चाहे घर में बैठी है चाहे घर से बाहर किसी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक कंट्रीब्यूशन है जिससे ये मुल्क चल रहा है. तो अगर ये मुल्क हमारी मेहनत हमारी मजदूरी से चल रहा है तो वी नीड एवरीथिंग वी डिजर्व, एंड वी डिजर्व एवरीथिंग रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है. आपको जो पसंद है वो अपनी जात तक के लिए आप रखें और आपको जो नापसंद है वो भी अपनी जात के लिए ही रखें, बिकॉज वी डोंट नीड एनीबडीज डिक्टेशन. हैविंग सेड दैट कि जो मूवमेंट्स हैं वो नैरेटिव बनाती हैं सोसाइटी में, और आज की जो हमारे समाज का नैरेटिव है वो बराबरी का नैरेटिव बनता जा रहा है.
वो आज़ादी का नैरेटिव बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ना हमारे हाथ में पत्थर हैं, ना हमारे हाथ में डंडे हैं, हमारे हाथ में सिर्फ प्लेकार्ड्स हैं जिनसे आप इतना डरते हैं, जो हम आपकी बंदूकों से भी नहीं डरते। हमारे वो प्लेकार्ड्स जो हैं, आप उनसे इतना डरते हैं जितना हम आपकी बंदूकों से भी नहीं डरते। सो ये स्ट्रगल हमारी है, जारी रहेगी, उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक हमारी स्ट्रगल जश्न में तब्दील नहीं हो जाती। और वो हम जश्न अभी भी अपनी मनाते हैं, लेकिन द थिंग इज, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आज औरत मार्च का 5वां साल है, आज मियांवाली में 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मारी गई। आज खैरपुर में एक 14 साल की बच्ची को 80,000 रुपए में बेच दिया गया है। और आप कहते हैं औरत मार्च की औरतें क्या करती हैं? औरत मार्च की औरतें ये सारी चीजें देखती हैं और इस पे आवाज बुलंद करती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो रियासत का ही होश में आती है। लेकिन उसके बावजूद हजारों जैनब हैं, हजारों मुख्तारा माई हैं, हजारों सबीन हैं। लेकिन ये सब हमारी कमजोरियां नहीं हैं, ये हमारी इंस्पिरेशन है। जब इनका हम नाम लेते हैं, हम फहमीदा रियाज का नाम लेते हैं, हम आसमा जहांगीर का नाम लेते हैं, जो एनर्जी हम औरतों में है, उन साथियों के लिए जिन्होंने जिद्दोजहद के लिए अपनी जानें कुर्बानी की हैं, अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, हम उनकी लेगेसी को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। आपको तकलीफ है, आप अपने घर में बैठ के रो लें, क्योंकि औरतें तो अब चुप नहीं रहेंगी। बहुत वक्त गुजर गया जब आप डरा सकते थे, कभी मजहब के नाम पे, कभी कौमियत के नाम पे, कभी हुब्बुल वतनी के नाम पे। सॉरी, हमें ये तशद्दुद अपने जिस्मों पर मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर आप जिस्म के लफ्ज से इतने खौफजदा हैं, तो अपने जिस्मों के साथ को लेते हुए जो सिनफी बुनियादों पे औरतों के साथ, ख्वाजा सराओं के साथ, कमजोर अकलियतों के साथ अपने जिस्मों से जो तशद्दुद करते हैं, अपने जिस्मों को कंट्रोल में लेकर आइए। फिर किसी और के जिस्म के ऊपर हाथ या बात करने की आप कोशिश भी करें तो आपको जवाब भी देंगे, लेकिन आप तमाम लोग इररेलेवेंट हैं। आपका इस मुल्क की तरक्की में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मुल्क का नाम अगर खराब कर रहा है तो वो आप जैसे लोग हैं, जो कि औरत की आज़ादी के खिलाफ हैं, जो कि औरत के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ हैं, जो औरत की बराबरी के खिलाफ हैं। क्योंकि अब माशरा इवॉल्व कर रहा है, और जो सच है, जो हक है, जो कानून है, जो आईन है, सब उसी की बात करेंगे। तो आप बजाते रहे तालियां, और आप बजाते रहें अपने कीबोर्ड के ऊपर अपनी उंगलियां, और चीखते रहें और गालियां देते रहें, क्योंकि ये गालियां अब हमारे लिए तमगे हैं। अब आपको उसके बाद क्या रह जाता है? आपने सारे इल्जाम लगा लिए, यू हैव नथिंग इन योर बैग्स, you have absolutely nothing in your bag। तो कुछ और लेकर आइए, कुछ अच्छा, कुछ किसी अच्छे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का, अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है उसका इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज अब आपका कोई मंजन दिख नहीं रहा है। क्योंकि हमारी जो जिद्दोजहद है, हमारी जो कुर्बानियां हैं, वो आपके जो 2% के अल्फाज हैं उससे बहुत बड़ी। और हम तो ऐसे ही चलते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही आवाज बुलंद करेंगे, और ऐसे ही अपने साथ दूसरी खवातीन को अपने साथ पोलिटिसाइज करते रहेंगे। हम सियासत भी करेंगे, हम मईशत भी चलाएंगे, हम घर भी देखेंगे, हम बच्चे भी पालेंगे, और आपसे भी कहेंगे कि ये बच्चे तुम्हारे भी हैं, मेरे साथ मिलके पालो, ये घर तुम्हारा भी है, मेरे साथ मिलके घर का काम करो, और ये मुल्क मेरा भी है, मैं इस मुल्क में बाहर निकल के काम करूंगी, ये सड़कें भी मेरी हैं, तुम्हें अगर बाइक चलानी है तो मैं भी बाइक चलाऊंगी, तुम्हें अगर गाड़ी चलानी है मैं भी गाड़ी चलाऊंगी, अगर बाहर निकल के मुझे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है तो जितनी ये सड़कें तुम्हारे बाप की हैं उतनी ये सड़कें मेरी माँ की भी हैं, मैं भी जाऊंगी, मैं भी काम करूंगी, क्योंकि तुम मानो या ना मानो मैं बराबर हूं, मैं बराबर हूं, मैं आजाद हूं। तो मुझे किसी की, इस मुल्क की औरत को किसी भी मर्द की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, किसी मोरालिटी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। अगर मोरालिटी के लेक्चर की जरूरत है तो वो आप मर्दों को है। अपने मर्दों को ऑर्गेनाइज करें, उनको तमीज सिखाएं, उनको बताएं कि अपने माशरे में रहने वाली औरत के साथ किस तरह बर्ताव करना है। जिस दिन आपके पास ये सब कुछ होगा, वील एंगेज विद यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज, क्योंकि हमारी जिद्दोजहद तो चल रही है और चलती रहेगी। इस साल औरत मार्च हुआ है, अगले साल फिर औरत मार्च होगा। इस साल भी जालिमों की, जाबिरों की, सरमायादारों की, ठेकेदारों की, जागीरदारों की बैंड बजी है, अगले साल इससे भी ज्यादा बैंड बजेगी। रोक सको तो रोक लो, क्योंकि यही असल तब्दीली है। रोक सको तो रोक लो, क्योंकि यही असल इनकलाब है। क्योंकि इस इनकलाब में
औरत शामिल है। तो जो तुम्हारा दिल चाहता है करो। वी आर हियर टू फाइट, वी आर हियर टू डाई, वी आर हियर टू कॉन्क्वायर द वर्ल्ड। सो थैंक यू वेरी मच। Oh damn! Qurrat went full. ये तो होगा, ये तो होगा। चुम्मा मेरी तरफ से, चुम्मा एक मुट्ठी इधर एक उधर। I love you, Qurrat. You're amazing. जो इंडिया में लोग पूछ रहे थे ना, why are people in Pakistan anti औरत मार्च, why are they so scared of औरत मार्च? I think Qurrat के इस रैंट में आपको उसका जवाब मिल गया होगा। इसको मैं अलग ना क्लिप करके बोलूंगा, सारे पाकिस्तान देखें। हजारों औरतें हैं ऐसी हैं। पीएम वाली स्पीच है, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर पीएम से मतलब आपका इमरान खान है तो फिर आई विल टेक इट एज एन इंसल्ट। पीएम जो है वो इमरान खान। तो मैंने ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इनकलाब आ गया है। बिल्कुल। देखें, ये सिर्फ एक आवाज है, हजारों औरतें। औरत मार्च कराची में, औरत मार्च हैदराबाद में, औरत मार्च कश्मीर में, औरत मार्च सक्खर में, औरत मार्च मुल्तान में, औरत मार्च कोयटा में, औरत मार्च इस्लामाबाद में, औरत मार्च कश्मीर में भी होगा, औरत मार्च गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा, औरत मार्च बलूचिस्तान में भी होगा। हर जगह औरतें बोलेंगी। और अगर आप औरत के बोलने से इतना डरते हैं तो फिर तो हर औरत को जरूर 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 बोलना चाहिए, और जोर से बोलना चाहिए, और इतना बोलना चाहिए कि जो लोग नहीं सुनते वो सुने, जो लोग नहीं देखते वो देखना शुरू हो जाएं, और जो लोग नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू हो जाएं, ताकि थोड़ी बहुत अकल जो है वो आप लोगों में भी आ जाए, ताकि आप जिस्म को जितना सेक्सुअलाइज करते हैं, आप देख लें कि इस जिस्म के अंदर मेरी आंखें भी हैं, मेरा दिमाग भी है, मेरी रूह भी है, मेरे हाथ भी हैं, मेरे पाँव भी हैं, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है। जिस दिन मेरा ये जिस्म काम करना रोक देगा तो पता लग जाना। ये किसी ने, जवाद अहमद ने चैट में बोला, कुरत वेंट एमएनएम। Zoya, tough act to follow, but since you've been here from the start, please do bring us home. I think, thank you for listening, but final words. I'll be very very quick because I think Qurrat ने honestly पूरी podcast की इतनी अच्छी summary दे दी है, and like that could have been a podcast in itself, in and of itself. That was honestly incredible to listen to. Thank you so much, Qurrat, and honestly यहाँ सब ख़वातीन को, सब feminists को सलाम, बिकॉज आई थिंक हमारी ही ये मेहनत है और जिद्दोजहद है और हमारा पसीना है जिसकी वजह से हम इस मुकाम पे खड़े हुए हैं जहाँ हम ये कह सकते हैं कि वी आर हियर टू स्टे। एंड बस यही है कि आई थिंक दैट जिससे कुरत ने बात की कि इतनी सोसाइटी शेक हो चुकी हुई है बिकॉज ऑफ द औरत मार्च, और इतनी जो रिस्पेक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स है हमारे माशरे की, क्योंकि वही है ना कि इज्जत हमारे साथ जोड़ी हुई है, पता नहीं किसने जोड़ी है, पूछा नहीं हमारे से, लेकिन वही है somehow we're the repositories of honor, and हमें पता नहीं किस किस की इज्जत संभालनी है, and we refuse to do it. And I think the best part about this movement is the fact that it's not just about our just us or ourselves, as I said before. हम अपने आप को डिसेंटर कर रहे हैं, हम पीछे हो रहे हैं, और हमें आई थिंक द ब्यूटी ऑफ फेमिनिज्म इज द फैक्ट कि जब आप फेमिनिस्ट बनते हो, आई मीन बिकॉज ऑफ योर ओन लिव्ड एक्सपीरियंसेस, देन यू रियलाइज दैट ओके, अगर ये मेरे साथ हुआ है तो और लोगों के साथ, और खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, ख्वाजा सहराओं के साथ, क्वेयर लोगों के साथ, religious minorities के साथ इससे बदतर होता है. And I think it's that kind of empathy, it's that kind of connection, it's that kind of collective, I guess, consciousness raising that you embark on, that is the beauty of this movement. And what I really love about it is its diversity, its humor, its memes, its placards, its murals, just everything. And that's what men don't understand, because I'm sorry, but most men everywhere are humorless, and नहीं, it's okay, शक्ल छुपाने की जरूरत नहीं है, हाँ खैर है वैसे ही, but most men are humorless. उनको सिर्फ तशद्दुद की ज़बान की समझ आती है, सरमायादारा निज़ाम की समझ आती है, वो एक ही मतलब ज़बान में बोलते हैं, और वो है वायलेंस, जंगो फसाद, गंदी किस्म की सियासत. And we refuse to bow down to them like on their terms. If anything, like they have to now negotiate with us on our turf. So yeah, like Pakistan is an interesting battleground right now. Let's see what happens. Thank you so much everyone for joining, and thank you everyone for listening. Take care. Bye-bye.